any other way. Otherwise, going along with you, I just want to understand one thing. It's being conceded by the Attorney General that there was no factual inquiry. Now, moving ahead, what can we do? What can this court do? That means that inquiry is that report by the Supreme Judicial Council on the basis of which he has been removed is unconstitutional, because Constitution requires. I'm not asking for an argument. I'm saying what can this court do? What if I was to ask you, okay, what sort of order can this court pass? What would you suggest? Declaring the inquiry, the report of the Supreme Judicial Council as unconstitutional, void, and nullity. And suppose the allegations that you level were not true, then what was it? Suppose that the allegations that you leveled, one person is saying no, one person is saying yes. Now we must have a mechanism to ascertain who is telling the truth. I mean, we can't throw a coin in the air and decide on that basis. So there are two possibilities. I mean, don't mind my saying so. Either the petitioner is telling the truth or is not telling the truth. There are only two possibilities. If, don't mind my saying so, if he's not telling the truth and he makes this allegation, and on that, and nobody ascertains, like you have alleged that nobody ascertained, and nobody ascertains whether his allegation is true or false, and is or whatever the order is set aside, surely this will not be proper. That's why I'm saying, how do we go forward now? That is exactly the case. If your Lordship may kindly see that I informed the Chief Justice of No, we understand that. They concede no inquiry was held. I'm saying, where do we go from here? So therefore, the entire proceedings against me... वो भी हो गई. Suppose, just for the sake of argument, we say, because we have to deal with these cases, it becomes precedent. Okay? Supreme Judicial Council, let's assume, did not do its job by inquiring into the matter. Correct? I think fundamental rights are available to judges as well. The due process and fair trial. By all means, hear it and then remove me. Because say this is false allegation you've leveled, you don't fit to be a judge, and not only you made a false allegation, you went and made it publicly. You would imagine, if it was false, he should be removed. If it was false, he should be removed. No. If the allegation that you make now, yes, is established to be false after the inquiry, yes, should you have been removed? Then can be yes. Okay. No. Now I reverse it. Yeah. If after inquiry it transpires that the allegation that you leveled was true, yes, they may say you still should be removed because you went public, or no, you should not be. But your emphasis is on the fact that one way or the other inquire into the matter. Am I correct in understanding that? Now because you had leveled initially allegations without making anyone a party, so we wanted to hear what the persons against whom the allegations had been made, what would they say? They may come and say, yes, I did so, but there was nothing wrong in it, or simply say, yes, I did it. But the matter can't end now because they're saying, no, this is all false. So who will ascertain the truth of the matter? The Supreme Judicial Council ought to have done that. My position is. Now your Lordship is. Zara mein solution bhi bata dena sir. We looking for how to solve this riddle. इसका simple जवाब है sir. जैसे पहले, in some cases it has happened.
एक तो ये है देखिए, जो हमने देखिए, to begin with नहीं, हमें सोल्यूशन हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए, हम आपका केस समझ गए। अब हम करें क्या ये बताइए। व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑर्डर which should not, either then it will amount to the same allegation that you've leveled on the other side. The other side will tomorrow complain and say, we come up with a solution now. सर, मैं solution ये है Yes. सर कि let this order of the president and the report may kindly be quashed and a commission may be appointed to ascertain the truth so that we can cross-examine them, they can cross-examine us. एक सेकंड ठहरिए ना। Commission, how, under what law will we do that? This honorable court can always do so. No, देखिए, To ascertain the truth about the matter. no, it can't be remanded to the Supreme Judicial Council. Sir, Is that a possibility or it's not? it can be, yes. It can be, yes. It can. No, I want your clear thinking on this. After questioning the order of सब आर्टिकल 7 भी पढ़ ले, सब आर्टिकल 7 there is one problem which I see. एक सब आर्टिकल 7 भी पढ़ ले। जी। 209 सब आर्टिकल 7 209 सब आर्टिकल 7 पढ़ ले। जी 7 सर, वो 7 की बात हो रही है ना, तो उसमें है a judge of the Supreme Court or of a High Court shall not be removed from office except as provided by this article. Article क्या provide करता है? President can remove on the basis of a report. The report has to be based on inquiry. So therefore under clause 7 नहीं, देखिए, He could not be removed. ये तो admitted fact हो गया that no one ascertained whether the allegation was factually correct or not. That much is established from what I've been able to understand. Unless somebody says, no, it's not been established. I don't think even Qazi साहब पूछते थे, Qazi साहब कहाँ गए? Was the one way or the other whether the allegation was true or not? Was it been ascertained or not? It was never inquired into, it was never ascertained, and if that part of the order would not carry. How do we go forward then on this? May I very respectfully submit? Because, both can't be telling the truth. No, quite right. May Yes. I very humbly submit, my lord. The order itself may have two components, although they are mixed up. As far as I am concerned, they are mixed up in the sense, one is with respect to the public speech that was made. Whether the public speech that was, ये मैंने कहा, that's a separate aspect. this is what I'm saying. That may in itself be such a grave crime that you remove him. No, I'm making a suggestion. Or nothing implied in the order is the fact that you've leveled such serious allegations against some people. Which cannot be sustained because no inquiry was held. That portion. What is the solution here? May I very respect, this is what I was saying, madam. May I very respectfully submit, the order itself is composed of these two components. One is that a public speech was made. The other is that there was an allegation made or there were some assertions made which were not inquired into, and that was also held against the petitioner. Now that portion cannot be held against the petitioner so far as the STC order is concerned, because that was never inquired into. We are only then left, as far as this list is concerned, only left with the question whether the public speech that was made was. नहीं, देखिए, उसका बड़े implication होगा. I think let's live in the real world. The entire eyes of the nation are before us. There are 2-3 constitutional offices involved. One is at stake is the independence of the judiciary. If I'm sure you will also agree that no judge should be removed without cause. I'm sure you will say that. Yes, quite right. That's true. That's one aspect. The other aspect is there's another constitutional body involved called the Supreme Judicial Council. Now, the Supreme Court should not interfere in the work of another constitutional body unless there is something so manifestly unconstitutional or unjust. What Mr. Hamid Khan Saab is saying is there was no inquiry held, and you are conceding it, and the Attorney General is also conceding it. Needless to say, if the statement made was false, he also concedes that the judge should have been removed. Now, the third issue is
the Supreme Court itself. We are hearing this case. Now the question arises, what sort of order we can pass in such circumstances? And I think there's an interconnected, where is the Attorney General? Attorney General, where is he? कलर मैं ऑफिस से चेक करवा लेता हूँ उनको ऑफिस में बुला लें अगर उनको. हाँ, sorry. खान साहब जरा ये ओपिनियन तो पढ़िए पेज 70 पे. ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल. Yes. पेज 70 पे है. 70. Yes. Conclusion, sir. This council is unanimously of the opinion, kindly see here, that in the matter of making his speech before the District Bar Association Rawalpindi on 21/7/2018, Mr. Justice Shaukat Aziz Siddiqui, Judge Islamabad High Court Islamabad, had displayed conduct unbecoming of a judge of a High Court and was thus guilty of misconduct, and he is therefore liable to be removed from the office under Article 2096 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. 2096, which says you inquire into the matter, which was never done. The other portion of this, your Lordship may find very relevant, is on page 49-50, where they decided to dispense with the inquiry. इसमें सवाल इसमें ये पैदा होता है, ये सवाल है कि सपोज एलिगेशन दुरुस्त है, सपोज क्या ये जिस तरीके से एलिगेशन बयान की गई है, जिस तरीके से क्या ये एक जज के लिए मुनासिब था? ये तो ओपिनियन उनकी ये थी कि चूंकि ये कर नहीं सकते थे. सर इसमें हुआ ये, there was only one hearing in camera done, nothing else was ये ever तो done. डिनाइल नहीं आपकी तरफ से कि तकरीर हुई थी. जी तकरीर हुई थी, ये डिनाइल तो नहीं है. नहीं वो ये तकरीर का डिनाइल नहीं नहीं सर, तकरीर का denial नहीं है. But देखिए, there are two kinds of speeches, ना? I mean, is a judge not allowed to make a speech? Yes. देखिए, I think we should not forget the facts. The fact is not making of the speech. If it's making of the speech, then probably half the superior judiciary will have to go home, because how many judges have made to the Bar Council's speeches? I mean, these are not too. So That speech was made before a bar No, no. association. So it's not a question of mere making of a speech. It's the content of the speech. I think both go together. Now it depends what I say. If I say there should be, I go and tomorrow I make speeches, independence of the judiciary, this, that, the other, fine. I may even canvass a view which is different. But if I make allegation against someone, so I think you can't disconnect the two things. It's the nature of the allegation. Because I would say if otherwise, then we will have to read that Article 19 is not available to judges. Yeah, that's what I mean, okay, you may not agree with the judge's point of view, fine. I mean, but you remove him on that ground. The code of conduct doesn't say you can't make a speech. So on it, I don't think there's anything wrong per se in making a speech. Now, if you make some speech and you attack, launch a vicious attack or loaded attack or whatever you want to call it, that we cannot disconnect with it. We have to read it, see it together. I mean, I can't just say, oh, making of a speech. I mean, making of a speech is your right. Anybody's right. And addressing I mean, it's not District Bar Association. By the way, you may be interested to know the United Kingdom, which is so conservative, judges give interviews. I mean, so House of Lords. I mean, those restraints have far gone, and judges of the American Supreme Court, as judges of the Supreme Court, Justice Stephen Breyer and Justice Scalia's debates, All make public. debates were pretty vicious on various law schools they were given. So let's connect it with the speech. Now, nobody's taking us to the next level. What do we do? Yes, sir. Can we personally ourselves inquire into the matter? Sir, one thing which I just want to point out, there were a number of speeches made by Justice Kiani which was published. To the Bar Association. I agree with you on that. Very clearly. No, I agree with you. It will be, I think it is connected with the content. Yes. भाई अगर आपने बिला वजह ऐसे इल्जाम लगा दिए to another I don't want to use the word institution, but it's important. Yes. Whatever department of the government आप कह लें, जो भी आप कहना चाहें,
So naturally, it is not a nice matter. But if they are true, it changes, I think, the complexion of the matter. Sir, page 70 अगर देख लीजिएगा, this is Solution मैं आपको ही नहीं बता रहा. नहीं सर, सोल्यूशन तो ये है कि इस वक्त ये जो ऑर्डर है प्रेसिडेंट का बेस्ड अपॉन द रिपोर्ट ऑफ द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल नीड टू बी क्वेश्चन्ड. देखें, Hamid Khan Sahib, it's not so simple. Then we'll be faced with an allegation that the Supreme Court threw Khwaja Saab's clients under the bus and saved one of their own. Again, we have to be very fair to both sides because you made allegation targeting specific persons. So if we quash it, that effectively means that all that you said was true without an inquiry, one way or the other. Now, how can we, what do we do then? So then the answer can be, I'm just making a humble submission, that let this order of the president be quashed, let the report be also quashed, and let the matter be remanded back to the Supreme Judicial Council to hold an inquiry. Then can this order be passed? I believe so. नहीं, हमें असिस्ट करें इस लेकिन बात पे. अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बगैर इंक्वायरी के रिकमेंड कर देती है रिमूवल ऑफ Okay, are you saying it's inherent in fundamental rights and due process? Yes. Power of remand. Can you remand the matter to the Supreme Judicial Council? and that can be consequential on the requestment of the order. It can be ख्वाजा साहब आप क्या कहते हैं इस there are पॉइंट पे? two ways. नहीं, let's see. ख्वाजा साहब is a senior counsel. Let's see what his view is. Can we remand the matter to the Supreme Judicial Council or we can't? My Lord, may I very humbly make a submission? It cannot be done because now there is nothing for the Supreme Judicial Council to inquire into, because the petitioner's tenure has already expired. He is no longer, it goes back, he would no longer be a judge to be considered for purposes of removal, which is the function of the Supreme Judicial Council. So it does not fall within the functions of the Supreme Judicial Council at this stage. This is what my very humble submission. So what is the solution? None? This matter requires the determination or No, not? let's suppose we, for sake of argument, don't take it amiss, that we set aside the order. That means that that's implied in the order that all that he said, the judge, when he was a judge, was true. So you are condemned. Won't you be condemned? It doesn't imply that, my Lord. Why? May I very Then he humbly- say everything I said was true, therefore the order was set aside. Yes, what he said, my Lord, so far as the allegations against specific persons are concerned, they came up for the first time before the Supreme Judicial Council. No, he's been saying it from day one. No, he hasn't. The specific allegations against persons, by naming them and naming the incidents also, they never figured in the speech, they never figured in the preliminary reply that was given to the Supreme Judicial Council. It was in the second reply, the additional reply that... No, but one way or the other, why didn't the Supreme Judicial Council say something on it? They could have asked him, say it on oath. Yes, what did the Supreme... I don't know, I called you to cross-examine him, I don't know, whatever way. I'll make a submission. What the Supreme Judicial Council did was, they asked for the then Chief Justice of Islamabad High Court for his reply on the allegations that were made by the petitioner vis-à-vis him. And he denied all those allegations. But it's one denial, I'm just making one assertion. Yeah, no, but more importantly, may I make a submission? I'd said that before also, and I'm trying to be as balanced. See, you can't just say because he's Chief Justice, I believe him, and because he's a simple judge, I disbelieve him. That's no... Now we come back to the speech itself. The sole ground on which the matter against the petitioner could have been sustained, this order can be sustained, is if this honorable court comes to the conclusion that that speech per se was sufficient for his removal because it came within the definition of misconduct. Are you suggesting a judge cannot give a speech to a bar counsel? No. What I'm making a submission, may I make a irrespective of whether it was true or not what the petitioner said, irrespective of that, because it maligned the judiciary as a whole. How does it malign the judiciary? Let's go through the speech itself, if your lordship would. No, and it maligned the Army Institute, the armed forces. He is maligning you. No, not in the speech. In the speech, it is the armed forces, it is the judiciary. They are the judges of the Islamabad High Court. Suppose the allegations are true, then what will happen? Even then, the petitioner should not have gone
gone public or made a speech before the bar. Why? He could have issued a contempt notice. No, why are you saying he should not? Unless you can specify some violation of some law, constitutional provision, or a constitute of the code of conduct of judges, you can't just say he should not have. You should refer to something I think because of this reason. The code of conduct says something to... We refer to that provision which says that judge cannot give a speech to the bar council or it's not whatever. a question of giving a speech. It is a question of giving a speech which maligns the judiciary. Exactly, it's the contents of the Or speech. which maligns any institution in the country. That is... Okay, let us... Only that has to be held. Let me, एक second, Khan Sahab, एक second. Please refer to the code of conduct. Code of conduct मुझे निकालने. Which provision are you relying upon? But may I very humbly submit, my lord, I am not taking sides in this case. No, I know. Because your lordship is called... No, actually, देखिए, it's always beneficial to have a senior counsel like yourself. I'm just... Because we are just thinking aloud how to proceed. Yes. And we'll be next be calling upon the Attorney General as well. So, which possible misconduct provision can you bring him under? There's one provision in the code of conduct, Hamza, which relates to public speech. Article 2 up. Maybe you can read Article 2. I'll read that and then I'll read Article 2 for your lordship, my lord, but I think there's another provision which talks about, this number 5. Yes, it's Article 5. May I very humbly submit? If it is to be stressed, it will fall under Article 5, nothing beyond. I will come back to that also. Functioning as he does in full view of the public, a judge gets thereby all the publicity that is good for him. He should not seek more. In particular, he should not engage in any public controversy, least of all on a political question, notwithstanding that it involves a question of law. It's not publicity he was seeking. He was, let's call him a whistleblower. Every whistleblower, you will say, is seeking publicity. What publicity he was seeking by this? You are assuming he was seeking. Burden will be on the person seeking his removal to show that he was seeking publicity. It's premised on that. As a judge gets all the publicity that's good for him, he should not seek more. So then it will be you are seeking publicity. In other words, you can't address bar councils. Yes, there'll be the media there. So what? May not engage in any public controversy. No, it says least of all on a it's not the public, it says political question. Where is politics here? There's no politics here. It states in particular, he should not engage in any public controversy, so if least of all on political matters. Let's take the worst case scenario. If the institution he is in, there is corruption, he should keep quiet. No, there is. So what should he do? He should be writing to the Chief Justice. Okay, he says failed. He should be writing to the failed. And if there is somebody, then what should he do? He should keep quiet about it. If there is someone approaching him, he has the power. He can issue contempt notice to that person. If anybody dares to approach him, to influence him in any of his decisions. There's corruption, for instance, not this case. We are giving a simple thing. What I'm saying, and his colleague is taking a bribe. He writes to the Chief Justice, he informs the Chief Justice, doesn't do anything. He gets frustrated. Okay? Maybe the frustration level comes to a point that I'll go public now. Okay? So, fine. You can, the person against whom he is alleged and himself, you can certainly hold him to task by saying, prove this allegation. And the other person who's alleged it will say, you made a false allegation, I'll show it. Which is exactly what's happened in this case. But may I? So which other article can you rely upon? This is the only article, I suppose, my lord. There is an article which was invoked in the order itself. Which one was that? Kindly read second para of Article 2. I'm going to read that. Right. Second para, Second para of Article 2. In the matter of taking his seat and of rising from his seat, he shall be punctilious in point of time, mindful of the courtesies, careful to preserve the dignity of the court, while maintaining an equal aspect towards all litigants, as well as lawyers appearing before him. He should be careful to preserve the dignity of the court. Yes. Yes.
This is all. My lord, I think You are saying it comes under this too? my lord, What's your what I'm saying is that these are the provisions which can be. No, tell me which one. My lord, I said Article 5 and Article 2, subpara 2 also comes within that because, my lord, from Faez sahab, we have an advantage in having you before us. My lord, I'm grateful for ठीक है, your thoughts. the advantage is you are now well versed with SJC matters. My lord. ठीक है, okay. The other SJC matters where you are proceeding again. One is finishing a complaint, right? You don't have to inquire into great details of every frivolous kind of allegation. You can just dispose it off, consign it to the record or whatever it's called. But where you proceeding against a judge? Why you proceed against a judge? With a view to remove him. So you have to give him some. I mean, here you may be conflicted as a lawyer. I'm not saying conflicted in this case, because your contentions at other place may be different. You will say, establish this thing. Fair enough. The burden on whoever lies the burden will establish it or not establish it. It doesn't get established. Clean bill of health. My lord. देखिए आर्टिकल 2 सब इसके सेकंड पैरा में लिखा है टू प्रिजर्व द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट। जो एलिगेशन इन्होंने लगाई है वो तो डिग्निटी ऑफ कोर्ट के अगेंस्ट है, तो इसको प्रिजर्व कैसे करें ये आपसे पूछे। उन्होंने एक तकरीर में कर दी। दूसरा तरीका आप बता दें कि कैसे कर सकते हैं। उसका तरीका मैंने बताया ना, जो एलिगेशंस लगा रहे हैं व्हाट इज my lord, I am again, let me reiterate, I am not taking sides. I am saying if it can be stretched, that speech and conduct in terms of that speech can be stretched, it could at best fall within these articles, and there is nothing beyond that. Article 5 or and this subpara 2 of Article 2. And this is for this honorable court to decide whether that speech, irrespective of whether it is based on truth or otherwise, comes up to that standard of falls within this mischief or not. That is all. As far as the inquiry part is concerned, that did not take place. So they were, and those specific allegations are not there in the speech. The order itself, when we read page 7, we read the conclusion, it is basically focused on the speech itself, which is said to be the reason why the removal is being recommended. It's not the question of any other issues that were raised there, because they were not inquired into. Yes, to the extent of the Honorable Chief Justice, the reply was sought, and that reply came, and whatever the Honorable Chief Justice said was against what the petitioner was contending. Did the Chief Justice, was he examined? No, he gave a letter. So it's all a question. If this is a matter which goes on to inquiry, then yes. But then it will mean that there must be a standard why you are believing the Chief Justice and disbelieving a judge. What I'm going to saying is going back to the observation. Is it the status which? No, not at all. Not at all. It was just. I am not even supporting that. I am not supporting that because the Honorable Chief Justice said something. Therefore, believe him and not believe the other part. I'm saying if this Honorable Bench comes to the conclusion that in this matter, irrespective of the contents of the inquiry itself, the speech itself, and that it was made publicly addressed to a bar association, which was then, this is fine, this is all right, this does not amount to misconduct, then the order that this honorable court has to pass, the way to move forward, is to exonerate him of the charges of making a speech which does not come within the ambit of misconduct. It does not imply that whatever he said was true or that it necessarily needs to be But if you read the order, it is 39 pages of the order. Yes. Content is there. If there was no content there, I mean, I would find it very strange that the mayor making of a speech. I have submitted, my lord, that in the order itself there is a mixture of the presumption that what was being said by him in terms of allegations were not true, without an inquiry. I've already said that is part of the order itself. Okay. What the conclusion would be then that this particular list would come to an end with the petitioner being exonerated of the charges, the order being set aside, the recommendation being quashed, and he gets whatever he gets. But beyond that, if this honorable court wants to go into whatever the list may नहीं होगा, it has to go out of this list. Khwaja Sahab, this nation has suffered enough. Now,
it's not a question of granting relief to a particular person or withholding a relief from a particular individual. As far as I'm concerned, that's least of my concerns. My concerns are the integrity of the institutions. If the allegation level is true, I mean, the nation wants to know the truth of the matter. This person is telling the truth or that person is telling the truth. You say, no, forget it. Leave it aside. It's not a small matter of a small office holder post. It's a institutional matter. Don't you, let me ask you very candidly, as a senior lawyer, would you not want to know the truth of the matter, that the petitioner is telling the truth or your client is telling the truth? Just as you have invested your life in this profession. Yes, what would you not want to know the truth of the matter? This is exactly what I'm saying. I am with your lordship on that. How will you get to it? What I'm saying is that not in this list, not in the case before How your do we do lordship, it? that your lordship takes suo motu action or takes some other action, but not it cannot be. इनकी एक तजवीज़ आई है कि send it for review, remand it to the Supreme Judicial Council, that Article 209(7) was not complied with, and 205 and 6 all use the word inquiry, and 7 says you cannot remove it unless you follow the procedure. So that was not done. Without this court determining it, could the Supreme Judicial Council re-examine it and determine it once and for all whether, I mean, I think the nation needs to know whether the allegation is true or false. Leave aside your interest and his interest. There is an interest of the nation. You come from an institution which is paid out by the public exchequer. The petitioner comes from an institution which is paid out of the public exchequer. These institutions are not for your personal benefits. They are there to serve the people. So what do we do with it? People will make fun of it. What have you come up with? Result? Who was telling the truth in this matter? Because the truth is diametrically opposed. He's saying one thing, you're saying the opposite. It's not a question of variation of the truth. He misunderstood me, I meant this. Then we could have maybe reconciled both versions. तो ये जरा बताएं, इसको solve करें. Just a गुजारिश की, what my learned friend has said, if he has proposed, if he is sticking to that the matter can go back to the Supreme Judicial Council. Can it? ये I see a legal impediment that the Supreme Judicial Council is not cut out, is not constituted, it's not part of the Constitution for the purpose of making an inquiry which does not involve the recommendation made to the President for removal or otherwise of that of a judge. That part of the function has already come to an end. Are you then suggesting a complaint is filed against a judge, or as in this case by the registrar, suo motu aap keh lein, whatever you want to call it, without inquiring into the complaint, Supreme Judicial Council says he is removed, recommends to the President, remove him. That's it. End of story. The petitioner is here for the purpose of getting it quashed precisely for this reason. नहीं, quash की बात तो नहीं आएगी. I'm saying that is the one person, but this is not a matter of one person. It's a matter of the independence of the judiciary, which the people of Pakistan have invested into it. They're not interested in a judge serving or not serving. This matter has gone into the public domain now. It has to be, the public has to be satisfied one way or the other. Who was telling the truth? Well, truth doesn't matter anymore. I keep emphasizing on truth. If he's truth, I think all the maslas will go away. No, just as it was open. Aren't you personally interested just to know? No, yes. May I make a submission? Burning inside you. But not within the framework of law, within the framework of Constitution, yes. We all want to know the truth, absolutely. But we have to remain within the frame. I do not see which provision prohibits such an order. I'm just thinking aloud. ये जो केस है आपके पास नहीं ये ऐसी जनरल बात कर रहे हैं. अगर एक और कल को केस आ जाए, एक कंप्लेंट हमारे पास पढ़ने नहीं बहुत सारी पड़ी हुई है, आती जाएंगी, मुझे कोई जज नहीं पसंद, मैंने कहा चलो हटा दो इसको,
सारे हमारे सुप्रीम जुडिशियल मेंबर्स अग्री कर लें, हाँ हटा दो, कोई हम इंक्वायरी करें कुछ ना करें, आपको बस खत्म हो गई बात, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। पिटीशन आती है, हाँ? एक पिटीशन। अगर देखिए एक बात है सब्स्टिट्यूटिंग योर ओपिनियन फॉर समवन एल्स, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। The other is inquiring into the matter. Even a murderer has committed murder in front of everybody, you still have to go through the process. I mean, even someone commits murder right in front of 100, 200 people sitting in this room. We can't just say hang him. No, we'll have to frame a charge. We'll have to bring witnesses. We'll have to give an opportunity for cross-examination. Total waste of time, you will say. Yes, that's what rule of law means. Total waste of time. Sometimes it amounts to that. I'm just trying to, like, each decision creates a precedent. So where should we go now from here? As I keep saying, my lord, the order gets quashed if this honorable But what will- bench comes to the then the conclusion that nation will hold inquiry us was accountable. necessary, notwithstanding the allegations made. It was, If you have finished, can we request the Attorney please, General? please. Huh? Yes. Okay. I made my submission. Have you understood, because you came in late? From what Let's just quickly recap everything. The petitioner made allegations in a speech to a bar. One is, you shouldn't speak to the bar at all, end of story, go home. The other is that the speech was so, whatever, it was not pleasant for someone or the other, and nonetheless it was made. Now the content is either true or false. It is admitted on all sides that the Supreme Judicial Council did not inquire into the matter. The word inquiry, Khan Sahib has said, finds mentioned twice, 5, again in 2096, and 2097 says you can't remove it unless this. Okay? To proceed further, you have to inquire into the matter, not to finish a complaint. If the complaint was consigned to the record, that's not the issue. But when you are proceeding against a judge, then Khan Sahib has said, where is my due process? Where is my right to, if everybody comes before me asking for right to fair trial. Now we come to the situation, where do we go from here? And the most important thing is that the allegation has been leveled against the institution, which is more important as far as I am concerned. ये इसके तहकीकात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अब सवाल में उड़ा। और एक चीज और, ख्वाजा साहब has also said one more thing, something important. He said once he's been removed and he's attained the age of superannuation, the matter ends. Now we were hearing some other case. Yes. The same issue came up there also. So, my lord, as far as not following or not conducting the inquiry is concerned, that is contrary to law, and that to my mind would be malice in law, and therefore Article 211's ouster would not apply as far as this petition Which ouster? is concerned. 211, sir. Article 211. What does it say? Bar of jurisdiction. Bar on jurisdiction, my lord. The number of judgments you said Ji. doesn't. So I think that's quite settled. So if the inquiry hasn't been followed, on the basis of it being there being malafide in law, Article 211 does not apply. Rather Therefore, than this going court would so have far as jurisdiction. malafide in law. No, but malafide in law is basically if the process is not followed. If what the law or the constitution requires is not followed, it is malafide in law. Not in fact, but in law. So because if that is so, then this court has jurisdiction, so the court can proceed. The court can look into the movement. We are not a substitute for the Supreme Judicial Of Council. course you're not, but now the We question... can't say, okay, now please come and give oath and give it on statement, No, this is- and Faez Sahib will No, cross-examine. this is jurisdictional question. This is jurisdictional question. You're not going to inquire into the matter while sitting as a court. The Supreme Judicial Council's, it is Supreme Judicial Council's remit to look into that matter. But I am just only saying that this court has jurisdiction to hear the petition if the inquiry has not been conducted, 209, and the procedure has We've not been crossed followed. that bridge. So yes. So We are once now in that the is realm of done, where do we go from here? once that is done, now one fact which was alluded to, and there's a judgment, a two-member bench's judgment in Afia Sheher Banu Zia's case, BLD 2023 Supreme Court 510.
wherein the two-member bench has held that if a judge has resigned or has retired, the proceedings, if while he was on the bench, had commenced before SJC, they would abate. Now, the federal government, I had in another matter stated before your lordship that the federal government intends to file an appeal against that judgment. Has it been filed? Yes, my lord, it has been filed. What number hai? My lord, it has yet to be numbered. I hope it will be numbered today or tomorrow. Now, there are several problems with that judgment, and of course, if the principle of that judgment is sustained, then it effectively cuts both sides. Then a judge who's been unconstitutionally removed can do nothing. now, so in this, If in the meantime he retired, for instance, so in this case, he attained the age of superannuation. so in this case, the distinction also is that after the judge was, the petitioner was removed, he had essayed those proceedings before this court, and he had not attained the age of superannuation at that time. So that distinction being there, but that judgment needs to be revisited also by this bench or any other bench in order for the court to then pass the order of setting aside the Supreme Judicial Council's order in this case also. Yeah, I'm not clear with you. Are you saying that we should attach that case with this case? I would submit so, my lord. Acha. Okay. And now, if the inquiry process has not been followed, and the allegation, now we don't know what Is remand permissible? if my lord, If you are saying if Afia is sustained, then it probably may not be. Is that what I'm not understanding? if Afia is sustained, then perhaps in this case, they may still have to, the petitioner may still have an argument to make, which is that he had not attained the age of superannuation when he had challenged the Supreme Judicial Council's order before this court. So there would be that distinction. I think there is a fact is that the list in some form or the other was before this court. That's right. So that's what I was alluding to, that if there would still be a distinction as far as this particular case if we accept this petition, yeah. what will happen? So we'll simply Things can happen. Two things can happen. If my lords accept this petition and simply set aside the Supreme Judicial Council's order without remanding it, then he would be treated as a judge who would retire. We are also concerned about the allegations. What would happen to the allegations? Suppose, with due respect to the petitioner and his counsel, suppose we set aside the order and he is laughing. All that I said was false. Okay? Nation, I think I'm more concerned that every case we decide we have to keep half an eye out. That iska implication generally kya hoga? You may want to do something, but it may have wide ranging implications. The other thing is, doesn't the nation want to know one way or the other? What is the position of the federal government on this? Wouldn't you want to, as they say, get to the truth of the matter? My lord, so I just got called on short notice. I know, that's not fair. But what I can state here is that now there are certain allegations which are made in this petition, and those allegations, from what I've understood while sitting here, have been denied. Not some minor allegations, some serious allegations. Those allegations have been denied, and now obviously this court cannot record evidence, is not the forum for doing it. Is there a solution? The solution, my lord, is that in order to look at the entire matter in totality, if Afia Zia is overturned and this matter is remanded to, the order of the Supreme Judicial Council is set aside and the matter is remanded to Supreme Judicial Council, then as far as the inquiry of these allegations is concerned, that perhaps is the only forum. And then question arises that the man has retired. What will happen? So for that purpose, you have to overturn Afia Shehrbanu Zia. For those purposes, you have to
first, this court has to overturn Afia Sher Banu Zia in order to cross that barrier and then go to the... This case is slightly different. He was not retired at that time. That's right. He was still before the court. Now, the question would still be that if the petition is allowed, what could be the consequence? Now, if limited consequences, जल्दी डिसाइड हो जाती है इनकी रिटायरमेंट से पहले तो मसला हल हो चुका वो भी हो चुका होता, बट अगर फॉर एग्जांपल एक ये हो सकता है कि जी पिटिशन आप अलाउ कर दें एंड he is treated as a retired judge and thus entitled to all the benefits which a retired judge is entitled to. But if on a broader scale, so on a broader scale, then I think since he has retired and now that is what's troubling me. Let's suppose a complaint is filed against a judge 1 month before his retirement. And the Supreme Judicial Council, without saying he is corrupt, Supreme Judicial Council, without inquiring into the matter, recommends to the President, reports, whatever, remove him. He's removed. Now, naturally, when he filed the petition, he's already retired. That's right. So I don't think the date would there be. He has got no way to vindicate his honor. There has to be a way. Basically, you are saying one way is no, too bad. Whether the Supreme Judicial Council inquired into the matter or not. I mean, whether we agree with the findings of the Supreme Judicial, that's a separate matter. One is at least inquire into the matter. Okay, I may have a higher level of proof, another may be lower, but leaving those technicalities aside, basic inquiry has to be conducted of some form or the other. Absolutely. I mean, whether it has to be in accordance with the Qanun-e-Shahadat or... No, it's the Constitution requires so. I mean, a judge cannot be removed without inquiry. Are judges entitled to fundamental rights or not? Absolutely. I mean, it is at the heart of independence of judiciary. Absolutely. Absolutely. At the heart of independence of judiciary has इसका solution क्या है फिर? So इसका solution to my mind आप is कह रहे हैं कि इसको क्लब करें उस केस के साथ? उसको overturn करना जरूरी होगा because that would then settle the law. Because in this case, obviously there was a substantial period of time when the petitioner was removed. लेकिन बात कहाँ से कहाँ connect हो जाती है? And his nobody could have thought this would connect there. About 3 years. So if he had 3 years to his service left. No, लेकिन like I said, suppose he had only 1 day left. Yes. So in that hypothetical, I mean, then obviously, I don't think that's really crucial aspect. So in that hypothetical, which my Lord has just pointed out, I think it is necessary that that point is settled. That the point is settled that even if he stands retired and attains age of superannuation, the matter can still be revisited by because that delay we are accountable for in this particular case. Because it's proceeded so long. We can't fault the petitioner on that. Oh, absolutely not. Nobody can. So, कितनी hearings हो गई थी इसमें? बेशुमार sir. Many hearings. हमने कितनी दफा सुना? Last hearing was. मैंने कहा आपका इल्जाम हम पे तो नहीं है. हमने कितनी दफा सुना इस केस को? दूसरा मैं आपको ऑर्डर शीट दिखाऊं तो ये दूसरी दफा है. हम मेरे साथ ही याद दिला रहे. But we are responsible for our seniors. अक्टूबर 2018 में ये पिटीशन फाइल 2000 ना नहीं वो क्योंकि वो पार्टी नहीं बनाया था ना उसमें भी टाइम लगा. वो आपका कसूर था खान साहब. थोड़ा हमारा कसूर था मगर वो आपका कसूर था मान लीजिए. क्योंकि आपने एलिगेशंस लगाई थी against people who were not before us. So we had to give them a notice. So that goes in your we don't accept responsibility for that. But the question that even shows that this was a case. Wasim Sajjad Sahab, can we benefit by your acumen? Have you been following what we are talking about? What is your view? Can it be remanded to the Supreme Judicial Council or not? But actually, I haven't studied this matter. I wouldn't like to make a comment without going through studying it properly because it's an important question. But I would say that the Supreme Court of Pakistan is the highest court, and there's nothing in the Constitution which prevents it from remanding the case back to the Judicial Council. But as I said, I would like to study the matter further.
once the matter is before your lordship also has the power to do complete justice under Article 187. So there's no impediment. आपकी अपील कब लगी है? My lord, filed earlier today. I think it will hopefully be numbered today. And once it is numbered, I think it can be fixed whenever the office fixes it. Point that you want to say at this juncture? Anyone, any of the council or? This is one of the exceptional cases. Earlier cases, like Justice Shaukat Ali's case, there was a detailed inquiry held. And after that, the Supreme Judicial Council submitted to the President to remove him. There have been even earlier cases, Ikhlaq Hussein's case, where inquiry was held. This is the first case of risk nature where no Supreme Judicial Council did not hold any inquiry into the allegations. So therefore, my submission is this goes right against the independence of... No, can you cite those cases, the earlier cases, where inquiries were held? One is Justice Shaukat Ali's case is PLD 1971 Supreme Court. 1971 Supreme Court. Page 585. 585. And here you are saying the Supreme Judicial Council did hold inquiry. Hold a very lengthy inquiry, some 80 witnesses and so on. So recommended the judge's removal. Remove. In the next cases, this is Justice Shaukat Ali. Earlier case was Justice Ikhlaq Hussein's case, PLD 1960 Supreme Court. Yeah, page there, 26 perhaps. जी अच्छा उसमें नहीं वो पेज नंबर अखलाक हुसैन हम ढूंढ लेंगे चलें खैर अगला वाला बताते हैं कोई और भी केस है ये दो केसेस हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट जज वाज रिमूव्ड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी। अब सर एक और बात 1956 का मैंने कॉन्स्टिट्यूशन एग्जाम देखा है उसमें कहीं इंक्वायरी की रिक्वायरमेंट नहीं थी एज सच बट inquiry was held. Which was that provision of 56 Constitution? Which article? Earlier article was 128. 128. Under the 62. Article 128, Supreme Judicial Council, which did not specifically mention the word inquiry. It mentioned inquiry. Article 128 was in the same terms as Article 209. But I'm talking about 1956 Constitution. Under the 1956 Constitution. किसमें नहीं था? ये इसमें नहीं था अखलाक हुसैन वाले केस में स्टेट वर्सेस अखलाक हुसैन नहीं वो कौन सा आइन साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अली सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है जो आपने मुलाहिजा की। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक, आप देखते रहिए डॉन न्यूज। चाहे कुछ भी हो जाए बाल रहे फिंगर कोम रेडी विद पाम ऑलिव नेचुरल शैम्पू। बालों को बनाए इतना स्मूथ और मैनेजेबल कि आप करें बस फिंगर कोम। सर्दियों में हीटर चलाएं तो थोड़ी सी खिड़की खुली रखें वरना सोने से पहले हीटर के साथ खिड़की भी बंद कर दें क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है। सुई सदन गैस कंपनी लिमिटेड। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। ताकि आपको मिले हर बार साफ और सेफ दूध। पैकेज दूध सेहत महफूज। एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से मजबूत, जड़ से मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। अब डेटा मिले एक्सट्रीम विद मंथली सुप्रीम। लगाए और पाए पूरे 20 GB डेटा और इसके साथ 500 अदर नेटवर्क मिनट्स और 5000 जोंग मिनट्स और SMS सिर्फ 999 रुपए के लोड में। अभी स्टार 3030 हैश मिलाएं। साउंड फॉर जे। ब्रेकफास्ट का वादा 1.5 पाव भाए हर माँ को ज्यादा। ऑल पर्स की वही प्योर गुडनेस अब 1.5 पाव बचत पैक में। क्या आपको चाहिए शाइनी बाल? सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स के साथ विटामिन ई का सुपर मिक्स।
जो दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। अब बाल करें शाइन ऑल द टाइम विद सनसिल्क ब्लैक शाइन। बिजली के बिल की डेट निकल गई। हाँ पता है मुझे, इस वक्त बात नहीं कर सकते। महीने का पिक एंड ड्रॉप पॉसिबल है? हाँ थाम के एहसास को साथ किसी के जी लिया। कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। यूफोन 4G सुपर कार्ड, जिससे मिले शॉक ऐप बिल्कुल फ्री, 20 GB और नॉन स्टॉप कॉलिंग मिनट्स के साथ। तो अभी *899# डायल करो। एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से मजबूत, जड़ से मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। ब्रेक के बाद भी go go go, साइंस का काम भी अवेज हो। परफॉर्मेंस में कोई ब्रेक ना हो, ऑलमोस्ट लेवल में जब ब्रेक में हो। डेटॉल स्किन केयर, क्योंकि ब्यूटीफुल स्किन है जर्म फ्री स्किन। इसका स्किन केयर फॉर्मूला दे पिंपल्स फैलाने वाले जर्म से हिफाजत, और इसके एडेड मॉइस्चराइजर्स रखें स्किन को सॉफ्ट महकती खुशबू के साथ। डेटॉल स्किन केयर, क्योंकि ब्यूटीफुल स्किन है जर्म फ्री स्किन। Try the all-new Wheat Pure. It smells amazing. Contains cucumber, aloe vera, and shea butter extracts or hair, dermatologically tested to give smooth and moisturized glowing skin. Choose pure. Choose Wheat Pure. एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से मजबूत, जड़ से मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। हर सुबह इन्हें लंच बॉक्स में देती हूँ ऑल पर्स फ्लेवर में। ऑल पर्स दूध की भरपूर ग़िज़ाइयत, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, मैंगो और बादाम ज़ाफ़रान के मजेदार फ्लेवर्स में। परफॉर्मेंस में कोई ब्रेक ना हो, ऑलमोस्ट लेवल में जब ब्रेक में हो। अब होगा हर एक्शन ग्रैंड विद यूफोन 4G सुपर कार्ड, जिससे मिले शॉक ऐप बिल्कुल फ्री, 20 GB और नॉन स्टॉप कॉलिंग मिनट्स के साथ पूरे महीने के लिए सिर्फ ₹949 में। तो अभी *899# डायल करो, क्योंकि सुपर कार्ड से शॉक तो लगेगा। कपड़े गरम पहनाता आया, जाड़ा आया, जाड़ा आया। कैसी हवा है? जरासीम का हमला। खांसी है, देखो बच्चे खू खू घर घर घर। सर्दियों का मौसम बन सकता है कई बीमारियों का सबब। डेटॉल सोप के रोजाना इस्तेमाल से सर्दियों में बच्चों को 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से शील्ड करना है आसान। ओलिविया हेयर कलर का 40 साल तजुर्बा, महारत और एतमाद। हर एक के बस की बात नहीं, सबसे ज्यादा नेचुरल एंड फैशन शेड्स जो दे मेरे बालों को नया रंग, नई जान। और फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड, जो ओलिविया की सुपीरियर क्वालिटी का सबूत है। मेरे पास ओलिविया हेयर कलर के अलावा कोई चॉइस ही नहीं। ओलिविया, शुक्रिया। चाहे कुछ भी हो जाए, बाल रहे फिंगर कोम रेडी विद पाम ऑलिव नेचुरल शैम्पू। बालों को बनाए इतना स्मूथ और मैनेजेबल कि आप करें बस फिंगर कोम। जब बबलू टॉयलेट की तरफ जाए और बोले, अपना टॉयलेट ना येलो क्यों है? तो कुछ और नहीं, नया हार्पिक छोटू, जो जमकर दाग धब्बे हटाए और दे महीने भर के लिए नए जैसा चमकदार टॉयलेट। वाओ! हार्पिक महीने भर चमकाए ऐसा, टॉयलेट बनाए नए जैसा। चाहे कुछ भी हो जाए, बाल रहे फिंगर कोम रेडी विद पाम ऑलिव नेचुरल शैम्पू। बालों को बनाए इतना स्मूथ और मैनेजेबल कि आप करें बस फिंगर कोम। ब्रेक के बाद भी go go go, साइंस का काम भी अवेज हो। परफॉर्मेंस में कोई ब्रेक ना हो, ऑलमोस्ट लेवल में जब ब्रेक में हो। एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से मजबूत, जड़ से मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। हार्पिक 10X का गाढ़ा फॉर्मूला कमोड पे ठहर के दे एसिड से 10 गुना बेहतर सफाई और करे जरासीम का खात्मा। अरे वाह, हार्पिक तो वाकई एसिड से बेहतर है। सबने माना, हार्पिक ने किया एसिड का सफाया।
पहली बार विटामिन सी और ग्लिसरीन के साथ नया लक्स, जो जिल्द को निखारे, नमी दे और दे चांद सा रोशन चेहरा। लक्स फेस ऑफ द ईयर माया अली। थैंक यू लक्स, पर ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, ये है इन सभी खूबसूरत चेहरों का जिनकी रोशनी से दुनिया रोशन है। लक्स, हमारा बेस्ट सोप, दे चांद सा रोशन चेहरा। मेरे बाल आपकी तरह घने और मजबूत कैसे होंगे? इधर आओ, मेरी तरह बालों में प्याज लगानी पड़ेगी। मुश्किल है, पहले छीले, फिर काटे, फिर इतनी देर तक लगा कर रखे। हाँ, मेहनत तो बहुत लगेगी, पर इसकी नया लाइफ बॉय नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू, इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला, दे घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। यूफोन 4G सुपर कार्ड, जिससे मिले शॉक ऐप बिल्कुल फ्री, 20 GB और नॉन स्टॉप कॉलिंग मिनट्स के साथ। तो अभी *899# डायल करो। हर दिल की सदा के मेरा थोड़ा कर लो मजा, just live it up। हर दिन खुशी से है भरा, करो up लाइफ का मजा। With 7 Up, यहाँ जो भी जहाँ, कर लो मजा with 7 Up। KE बना रहा है आपसे कनेक्शन एक क्लिक में। नया कनेक्शन हासिल करना हुआ और भी शफाफ और आसान। बस KE वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करें, कहीं भी कभी भी, न झंझट न लाइन, हर सहूलत ऑनलाइन। KE। पहली बार विटामिन सी और ग्लिसरीन के साथ नया लक्स, जो जिल्द को निखारे, नमी दे और दे चांद सा रोशन चेहरा। लक्स फेस ऑफ द ईयर माया अली। थैंक यू लक्स, पर ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, ये है इन सभी खूबसूरत चेहरों का जिनकी रोशनी से दुनिया रोशन है। लक्स, हमारा बेस्ट सोप, दे चांद सा रोशन चेहरा। एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से मजबूत, जड़ से मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन GT रोड पर। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। क्या है डव का नेचुरल ड्राई टेस्ट? स्टाइलिंग के बाद तो सबके बाल अच्छे लगते हैं, पर नेचुरली ड्राई होकर उलझे हुए, इतने बेजान, बहुत सूखे। ये सब डैमेज की निशानी है। इन्होंने ट्राई किया डव इंटेंस रिपेयर। इसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क और न्यूट्री सीरम, जो डैमेज रिपेयर पहले वॉश से शुरू करे। इतने स्मूथ, काफी सॉफ्ट लग रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा है ये मेरे बाल हैं। आई लव इट। डव इंटेंस रिपेयर, डैमेज रिपेयर शुरू पहले वॉश से। यूफोन 4G सुपर कार्ड, जिससे मिले शॉक ऐप बिल्कुल फ्री, 20 GB और नॉन स्टॉप कॉलिंग मिनट्स के साथ। तो अभी *899# डायल करो। एक दफ़ा फिर आपको ले चलते हैं सुप्रीम कोर्ट में। बराह रास्त साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर समाअत जारी है। Islamabad High Court and asked him not to let Mr. Nawaz Sharif and his daughter come out of prison before general elections 2018 and not to include your lordship in the bench. And that Chief Justice Islamabad High Court responded that the bench will be constituted as per their desire. That your lordship claimed to even have knowledge of the person who conveys messages to the Supreme Court, that daily proceedings of accountability court were being reported somewhere, and that your lordship also knows the reason why the administrative control of Islamabad High Court as per statute was removed, so that no judge could look into the proceedings.
that your lordship was asked to give assurance that your lordship would give decision as per their request, and then references pending against your lordship would be closed. That if your lordship decided cases according to their desire, your lordship would be made Chief Justice Islamabad High Court by September 2018. Upon presentation of the transcript of your speech, Honorable Chief Justice of Pakistan had been pleased to observe that the allegations leveled in the speech had cast aspersion and maligned the superior judiciary of the country and berated its independence. It also implies some other national institutions. And the Honorable Chief Justice of Islamabad High Court was asked to comment upon the veracity of the allegations leveled against him. He was also asked to obtain from your lordship the material evidence available, if any, to be immediately transmitted to the office of the Chief Justice of Pakistan for consideration and appropriate action if necessary. In response, Honorable Chief Justice Islamabad High Court offered his comments by letter dated 29/7/2018, wherein his lordship responded that while a letter dated 24/7/2018 received from your lordship regarding allegations leveled against Honorable Chief Justice of Islamabad, his lordship has categorically denied all the allegations. The above act on your part amounts to misconduct as envisaged in the provisions inter alia of Article 2, 3, 5 and 9 of the Code of Conduct prescribed by the Supreme Judicial Council. One fact I want to bring to the notice, sir. At the time when these proceedings were initiated, proceedings were going on against Justice Anwar Qazi, Chief Justice of Islamabad High Court, before the Supreme Judicial Council for quite some time. I remember in another case when he sat on the Supreme Judicial Council and I objected. That was a case where I was counsel for Justice Farooq Irfan. I objected to his sitting on the Supreme Judicial Council on the ground that under Clause 3 of Article 209, a judge against whom proceedings on the Supreme Judicial Council were being was it the same matter or some other matter? That was a question. They declined that. I don't understand your contention. Are you saying, suppose I'm disclosing, I'm stating facts. No, एक second. Fact you may be stating, but you are making a legal implication out of the stated facts. Now, for instance, suppose the Supreme Judicial Council is legitimately convened to inquire about a judge. It may be used as a tactical ploy to file complaints against all the members of the Supreme Judicial Council and then say, oh, none of you can hear the matter. So merely that in itself is nothing relevant unless there's a direct nexus. Otherwise तो ये तो बड़ा खूबसूरत होगा. इनके भी खिलाफ कर दो वो फेल ही हो गया Supreme Judicial Council. मैंने ज़िमनन बताई कि उस वक्त ये ऑब्जेक्शन इसलिए लिया गया था कि Justice Anwar Qazi was under inquiry in another case against him. देखिए खान साहब आप रिकॉर्ड मंगा लें. खान साहब सॉरी, या तो आप इसको कोई दलाइल देना कानूनी आईनी, ये मुझे बात समझ नहीं आ रही है भाई. हमें नहीं पता कल कोई 50 कंप्लेंट फाइल कर दे सब जजेस के खिलाफ तो सुप्रीम इदारा ही खत्म हो जाएगा. नहीं, वो इंक्वायरी वहां होती है जहां सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल सेज दैट देयर इज अ प्राइमा फेसी केस for proceeding against him. There was a case which was going on, inquiry was going on. How would that matter to him, to the petitioner? How it maybe he gets removed, both get exonerated. मेरी बात मुकम्मल सुन लीजिएगा फिर उसके बाद. हाँ बताइए. हुआ क्या? ये जो फैक्ट्स यहाँ दिए गए हैं कि उनको खत लिखा गया था कि बताएं ये एलिगेशंस हैं, उन्होंने डिनाई किया. What happened? मुझे 11 अक्टूबर को रिमूव किया गया ऑन द रिपोर्ट ऑफ द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल. उसी दिन या उससे अगले दिन उनको एक्सोनरेट कर दिया गया फ्रॉम द चार्जेस ही वाज फेसिंग बिफोर. सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं. That the very next day, ये facts जनाब आप. I'm saying for the sake of arguments, if these facts are correct, what does it mean? It means, sir, that वो चूंकि गवाह बन गए हमारे खिलाफ तो उसको उसकी जो एलिगेशन से उसे एग्जम्प्ट कर दिया गया. नहीं, क्या वही कंप्लेनेंट दोनों केस में था या तो कुछ ऐसा नेक्सस जोड़िए ना. ये बातें और है. मैं सिर्फ जनाब को बता रहा हूँ देखिए कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने किया क्या.
जब उन्होंने मेरी एलिगेशंस को डिनाई किया तो उनको छोड़ दिया। जहाँ तक आपकी बात सब, देखिए हम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल पे ऐसे उंगलियां नहीं उठाएंगे। जहाँ तक आपने बात की ना इंक्वायरी की, वो तो हमें समझ आ गई ना, आपने एक आईनी बात कर दी, वो समझ आ गई। अब ये हो सकता है नहीं हो सकता, अभी हमें इस मफरूजों में क्यों जाएंगे? नहीं, लेट्स स्टे आइन पे बात करें, क्योंकि अब आप 184(3) में आ रहे हैं। देखिए इसमें 184 का दरवाजा खुलता है, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट का एलिमेंट आ जाता है। हर जज की सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड इज रिमूवल आई थिंक इज अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, इसलिए उसका दरवाजा खुल जाता है। आ गई बात इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आपने बात कर दी ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल, बिल्कुल ये भी समझ आ गई। मगर अब ये जो बाकी चीजें, ये इसमें कुछ समझ नहीं आ रही बात, इसलिए कि जो हो सकता है सही भी हो तो सो व्हाट। ये पोर्शन मैंने पढ़ के, आपने कहा तो मैंने पोर्शन पढ़ा। अच्छा इसको छोड़े, कोई और बात करें। चलिए तो मैं नहीं, कोई और बात करें तो बताएं। मेरी तो गुजारिश सिंपल ये है कि दिस इज अ केस वेयर ए जज हैज बीन रिमूव्ड विदाउट फॉलोइंग द प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस। We got the point, and we are just saying how to go forward, that's all. This order has to go, this report has to go, has to be quashed, so that in the future. But what about the public interest in the matter? They need to know. So, or they are not entitled to know. उसके लिए मैंने ऑलरेडी सबमिशन की है कि ये ऑर्डर सेटिसाइड होके इसको जनाब रिमांड कर सकते हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल एंड इंक्वायरी इनटू द मैटर। दैट इज द आंसर टू माय माइंड। इफ योर लॉर्डशिप थिंक्स, अगर आप नहीं, ठीक है, इफ यू कंक्लूडेड, वी डोंट वांट टू कट यू शॉर्ट, कैन वी मूव ऑन टू सलाह? आई जस्ट सॉ दैट ही इज इन कराची। जी ठीक है सर, मेरी सबमिशन ये है कि रिमूव विदाउट इंक्वायरी इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑट टू बी स्क्वैश्ड। हामिद साहब, आप इस एस्पेक्ट को तो डिनाई नहीं करेंगे कि जस्टिस सिद्दीकी साहब को एम्पल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी गई थी, क्योंकि प्रोसीडिंग्स 2 महीने से ज्यादा चली हैं और कम से कम 2 से 3 रिप्लाईज इन्होंने जमा कराई हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हामिद साहब आपसे पूछ रहा हूँ। जी सर, सॉरी, मैं ये कह रहा था कि आप इस एस्पेक्ट को तो डिनाई नहीं करेंगे कि जस्टिस सिद्दीकी साहब को एम्पल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी गई है, 2 महीने से ज्यादा प्रोसीडिंग्स चली हैं और इन्होंने कम से कम 3 से 4 रिप्लाईज अपनी जमा कराई हैं। लिहाजा ये एस्पेक्ट कहना कि जी इनको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिली ही नहीं या इनको टाइम नहीं दिया गया, तो ये तो किसी हद तक के दुरुस्त मालूम नहीं होता रिकॉर्ड से। लेकिन अब प्रोसीडिंग शुरू हुई हैं 23/8 को और कंक्लूड हुई है 1 अक्टूबर को, यानी कि तकरीबन 2 महीने से ज्यादा चली है प्रोसीडिंग्स। और सुन तो लीजिए, और कम से कम 2 से 3 दफा इनकी रिप्लाईज आई हैं और उनकी रिप्लाईज जितनी भी हैं वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने कंसीडर करी हैं और सारी रिप्रोड्यूस की हैं अपने ऑर्डर के अंदर, और उसके बाद फिर इनके खिलाफ ये फैसला दिया गया है कि जनाब ये मिसकंडक्ट के मुर्तकिब थे। इसके बारे में आपका क्या कहना? जी, मैं ये कहता हूँ उन्होंने एक शो कॉज नोटिस दिया 31/7/2018, उसके जवाब में एक प्रिलिमिनरी मैंने सबमिशन की, क्योंकि 14 दिन दिए गए थे। मैंने कहा मैंने फैक्ट सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं और मैं एडिट रिप्लाई दूंगा। फिर मैंने एडिट रिप्लाई दी, ये 2 रिप्लाईज मैंने दी है। एक एप्लीकेशन मैंने और दी उसमें जो रिकॉर्ड पर है पेज 223-24 पे, उसमें मैंने कहा कि इन द फर्स्ट प्लेस addressing a district bar association is not a misconduct within the meaning of Article 209, but if this honorable council thinks that this is a case in which I should be proceeded against, please in that case give a public hearing to us, give it as an open court। मैंने ये एप्लीकेशन दी, जिसको कभी उसके बाद एक इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हुई, उसमें भी मैंने ये बात रिपीट की कि अगर जनाब मजीद प्रोसीड करना चाहें, उनको तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी थी, वो कोई फाइनल इंक्वायरी जो है सिटिंग नहीं थी, तो मुझे आप ओपन हेयरिंग दीजिएगा। ये पेज 313 के ऊपर ये मौजूद है मेरी दरखास्त, पेज 313 पर, पेज 313, ये वॉल्यूम 2 होगा जी इसका, इस केस का पेपर बुक 2। इसकी तारीख है 29/9/2018।
पेज क्या बताया था आपने? The applicant पेज आप दोबारा 313 sir. 313. Application for open hearing guaranteed under the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. ये इसकी आपकी इस्तदा कौन से पेज पे? इस पे फैसला क्या हुआ? It is therefore prayed. इस पे क्या फैसला हुआ? जी डिसाइड क्या हुआ? डिसीजन उसमें नहीं हुई. I was never given any hearing. इसके बाद the one hearing was in camera. इसमें इशू तो ये है कि जहाँ तक तकरीर की बात है, आप तकरीर डिनाई नहीं कर रहे हैं. मालूम सिर्फ ये करना है कि ये मिसकॉन्डक्ट में आता है या नहीं, नंबर 1. इसका दूसरा एस्पेक्ट जो है, जो कि बार बार मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो जो एलिगेशंस थी उसको मालूम करना चाहिए था दुरुस्त थी या नहीं थी. तो क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो तहकीकात कर सकती है? सपोज अगर आज हम रिमांड भी करते हैं तो क्या वो तहकीकात वहाँ हो सकती है या इसको कहीं और होना है? हाँ, बिल्कुल इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए थी. बल्कि पहला कौन करेगा इंक्वायरी? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को करनी थी ना. नहीं, वो दूसरी एलिगेशन की जो इन्होंने एलिगेशन लगाई उसके बारे में क्या कहते हैं? तो एलिगेशन ये जो कह रहे हैं, जो कोर्ट्स पे जो बाकी रिस्पोंडेंट्स पे जो एलिगेशन लगी है, क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस हद तक तहकीकात कर सकती है? बिल्कुल कर सकती थी. और बल्कि मैंने ओपन हेयरिंग के लिए कहा था कि आप हमें ओपन हेयरिंग दें. देखिए, शायद मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ. आप पे ये एलिगेशन तो नहीं है कि आप सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं. आप पे एलिगेशन ये कि आपने जुडिशरी को मिलाइन किया, जो कि मिसकॉन्डक्ट में आता है. ठीक, वो तो आप मान रहे हैं कि तकरीर की सिर्फ ये देखना है कि आपकी तकरीर ज़ुमरे में आती है या नहीं. लेकिन जो एलिगेशन है उसकी तरफ तो किसी ने तवज्जो नहीं दी कि वो एलिगेशन किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक गलत है. उसकी गलत है तो ही शुड फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, और अगर दुरुस्त है तो हु इज रिस्पांसिबल, ही शुड फेस द. लेकिन सवाल ये कि कौन करेगा? लेकिन उन्होंने इंक्वायरी करनी थी ना इसमें. पहले तो मुझे स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशंस देना था कि ये एलिगेशंस हैं इनका, इसको आप बीट करें. कोई स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन कुछ नहीं किया गया. सो गुजारिश मेरी ये, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वेरी पावरफुल बॉडी. आप जरा 210 भी पढ़ लें आइन का. ये बिल्कुल सही है कि जरा देखिए इसकी जरा मैंने अभी इसके जरा अल्फाज का चुनाव जरा देखिए. और कॉन्स्टिट्यूएंट फोर्स अटेंडेंस ऑफ पर्संस. यस, नहीं टेक्स्ट पढ़िए ना. फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरिंग इनटू एनी मैटर not pertaining to, it doesn't connect with the conduct of the judge. अभी I widened up the scope. जरा आप पढ़े आगे. सर वो इससे कनेक्टेड नहीं, जरा चले पढ़ते हैं आगे. The council shall have the same power as the Supreme Court has to issue directions or orders for securing the attendance of any person or the discovery or production of any document, and any such direction or order shall be enforceable as if it had been issued by the Supreme Court. The provisions of Article 204 shall apply to the contempt powers be. So it's a very powerful body. It can call anybody. That is what in the context of inquiry. Naturally, it has to be. It's not hearing a case. It's inquiry. So वो आपने जो इंक्वायरी कमीशन की बात की, तो ये खुद ही इंक्वायरी कमीशन है इन अ वे. बिल्कुल more powerful than इंक्वायरी. कंटेम्प्ट के पास भी इनके पास है. बिल्कुल सही है. मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं सबमिटेड the answer is खान साहब, let me put my anxiety to you. Every Supreme Judicial Council is not the Supreme Court. It's a separate constitutional body. Agreed? Every constitutional body should have maximum autonomy to decide matters. Agreed? Thirdly, we don't want to encroach or say or do anything. It just so happens that I'm a member of the Supreme Judicial Council as well, but we create precedent as well, that it undermines the Supreme Judicial Council. Supreme Court is not a watchdog over. However, like every other constitutional body, when a constitutional provision or a fundamental right is being violated by anybody or not being considered, let's both ways, then the Supreme Court is the only court which has the power, or the High Court, not in this case, to direct that this be done. Yes. So we have to be very careful how we
proceed in this matter, because it will, like you are citing Justice Clark's case after 50 years, this will become precedent and it will be cited before us maybe earlier than 50 years. So we have to be very careful as to not disturb the perfect balance that the constitution makers have provided in the constitution. सुप्रीम कोर्ट में साबिक जज शौकत सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर समाअत जारी है। वकील हामिद खान ने शौकत सिद्दीकी के खिलाफ पहली कार्रवाई का लदम करार देने की इस्तदा कर दी है और इस वक्त भी वकला दलाइल दे रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जैज मंथली यूट्यूब एंड सोशल ऑफर पाएं 15 GB इंटरनेट, 50 दूसरे नेटवर्क मिनट्स, 500 जैज मिनट्स और SMS सिर्फ 380 रुपए की डिस्काउंटेड प्राइस में। *620# कोड मिलाएं। सुपर नहीं तो 4G नहीं। जैज सुपर 4G। डोंट वरी, ब्राइट साहब ब्राइट कर देगा। यूफोन 4G सुपर कार्ड, जिससे मिले शॉक ऐप बिल्कुल फ्री, 20 GB और नॉन स्टॉप कॉलिंग मिनट्स के साथ। तो अभी *899# डायल करो। मिर्चों से मसूड़ों में जलन की है कोई हल? लो नीम, यूकेलिप्टस और पुदीने वाला कोलगेट हर्बल मुंह में ठंडक पहुंचाए, दांत मसूड़े सेहतमंद बनाए नेचुरली, ताकि आपको मिले हर बार साफ और सेफ दूध। पैकेज दूध, सेहत महफूज। चाहे कुछ भी हो जाए, बाल रहे फिंगर कोम रेडी विद पामोलिव नेचुरल्स शैम्पू। बालों को बनाए इतना स्मूथ और मैनेजेबल कि आप करें बस फिंगर कोम। पूरा करें ब्रेकफास्ट का वादा, 1.5 पाव भाए हर माह को ज्यादा। ऑलपर्स की वही प्योर गुडनेस अब 1.5 पाव बचत पैक में। ऑलपर्स की हैप्पी सुबह। क्या है डव का नेचुरल ड्राई टेस्ट? स्टाइलिंग के बाद तो सबके बाल अच्छे लगते हैं, पर नेचुरली ड्राई होकर उलझे हुए, इतने बेजान, बहुत सूखे। ये सब डैमेज की निशानी है। इन्होंने ट्राई किया डव इंटेंस रिपेयर। इसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क और न्यूट्री सीरम, जो डैमेज रिपेयर पहले वॉश से शुरू करे। इतने स्मूथ, काफी सॉफ्ट लग रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा है ये मेरे बाल हैं। आई लव इट। डव इंटेंस रिपेयर, डैमेज रिपेयर शुरू पहले वॉश से। पाकिस्तान जितने खाने बनाता है, नया ब्राइट उतने ही दाग मिटाता है। क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से मजबूत, जड़ से मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। पहली बार विटामिन C और ग्लिसरीन के साथ नया लक्स, जो जिल्द को निखारे, नमी दे और दे चांद सा रोशन चेहरा। लक्स फेस ऑफ द ईयर, माया अली। थैंक यू लक्स, पर यह अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, यह है इन सभी खूबसूरत चेहरों का जिनकी रोशनी से दुनिया रोशन है। लक्स, हमारा बेस्ट सोप, दे चांद सा रोशन चेहरा। नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करे हर हेयर स्टाइल। इस शादी सीजन जब बाल हो थिक, कोई भी स्टाइल करो पिक। अब डेटा मिले एक्सट्रीम विद मंथली सुप्रीम। लगाए और पाए पूरे 20 GB डेटा और इसके साथ 500 अदर नेटवर्क मिनट्स और 5000 जोंग मिनट्स और SMS सिर्फ 999 रुपए के लोड में। अभी *3030# मिलाएं। जोंग 4G। एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से मजबूत, जड़ से मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। हर मौसम में मेरा चेहरा रहे बिना चिपचिप सॉफ्ट सॉफ्ट। बताओ कैसे? नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर, हर मौसम के लिए। इसका विटामिन E लाइट फॉर्मूला जिल्द में फौरी जज्ब होके दे बिना चिप और सॉफ्ट स्किन। नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर।
हर सुबह इन्हें लंच बॉक्स में देती हूँ ऑलपर्स फ्लेवर्ड में। ऑलपर्स दूध की भरपूर ग़िज़ाइयत, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, मैंगो और बादाम ज़ाफ़रान के मजेदार फ्लेवर्स में। MCB लाइफ पे नो झंझट, यहाँ हो सब सिक्योरली, क्योंकि ये है द बेस्ट ऑफ डिजिटल बैंकिंग श्योरली। तो डाउनलोड करो MCB लाइफ, फास्ट, फ्यूचरिस्टिक, फटाफट बैंकिंग। अब होगा हर एक्शन ग्रैंड विद यूफोन 4G सुपर कार्ड, जिससे मिले शॉक ऐप बिल्कुल फ्री 20 GB और नॉन स्टॉप कॉलिंग मिनट्स के साथ पूरे महीने के लिए सिर्फ ₹949 में। तो अभी *899# डायल करो, क्योंकि सुपर कार्ड से शॉक तो लगेगा। सर्दियों में हीटर चलाएं तो थोड़ी सी खिड़की खुली रखें, वरना सोने से पहले हीटर के साथ खिड़की भी बंद कर दें, क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है। सुई सदन गैस कंपनी लिमिटेड। एक बार फिर आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में साबिक जज शौकत सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर समाअत जारी है। वो पैराग्राफ किधर है? जी वो उधर भी आ जाएगी। It's a very historic judgment in that केस में आप कहते नहीं अलाउ हुई हैं सब SJC क्या फायदा वो वापस भेजा ना सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को 577 पैरा 96 वो एक Consequently, the question regarding the conduct of proceedings. नहीं, तो ये तो वो रिमांड हो गया ना, ये केस रिमांड का केस है। नहीं, इसमें उन्होंने कहा कि नो हामिद खान साहब सब्जेक्ट टू हम जो इतनी देर से आपसे सवाल पूछ रहे हैं, ये पैराग्राफ 96 जो माय लॉर्ड ने पॉइंट आउट किया, सब पढ़िए। नहीं वो ठीक है, उससे आप पढ़िए तो सर बात ये है, या पहले पढ़े तो ना 577 पे। Consequently, the question regarding conduct of proceedings through an open justice as requested by needs to be revisited and decided afresh by ACG, not standing uninfluenced by its order dated so जो order set aside उन्होंने किया। आप पढ़े ना। In the light of the observations made herein above, in the light of the observations, तो this is observations क्या हैं? एक सेकेंड जी सर, हमारी बात सुन लेना। अभी हम आपसे बार बार पूछ रहे थे रिमांड, तो ये रिमांड ही तो किया है। पिछले सवालों का जवाब है तो ये पहले सवाल का जवाब इधर मिल रहा है। मैंने भी तो रिमांड ही मांगा है। नहीं, अगर आपने बताया ही नहीं कि आप कोई और वजह से बताया। जजमेंट का मैं ये कह रहा था कि उसमें फिर क्या किया सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने इस ऑर्डर के बाद? इस ऑर्डर के बाद उन्होंने अलाउ की थी इन दैट पर्टिकुलर केस दे अलाउड ओपन हियरिंग। वो ऑर्डर कहाँ है? वो कोई दूसरा रेफरेंस था क्या? वो दूसरा रेफरेंस, वो रेफरेंस 242 है। अच्छा, ये केस नहीं, जो इस केस में इम्प्यून था वो रेफरेंस 242। लेकिन इस रेफरेंस की तो बेसिस जो है वो तकरीर है, और उस तकरीर को आप डिनाई नहीं कर रहे हैं, उसके कंटेंट्स को। ठीक है, but then that has to be inquired into. तो मेरा गुजारिश ये करनी थी, जो जनाब के ऑब्जर्वेशन थी, that reference was dismissed. What happened? That was never decided. You want that proceedings take off. You want that be also be decided. आप चाहते हैं कि उसको भी डिसाइड करें? सर बिल्कुल नहीं, इसकी बात नहीं। मैं तो आपके सामने आपका प्रेसिडेंट दिखा रहा हूँ कि प्रेसिडेंट ये है। फिर उसमें इंक्वायरी के तरीका कार इसमें बड़ा अच्छा तरह डिस्कस हुआ है, वो भी जरा देख लीजिएगा। उसमें उन्होंने कहा कि ये जो इंक्वायरी होगी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की, उनके ये पैरामीटर्स होंगे। मैं उसकी तरफ जनाब की तवज्जो दिला रहा था। वो तो आखिरी में उन्होंने कहा कि जी ठीक है, रिमांड कर रहे हैं आप, इस जजमेंट की लाइट में आप डिसाइड करें। परफेक्टली ऑल राइट। वो एक पैरा था, मैं कहा था इंक्वायरी में ये कुछ होना चाहिए। तो खत्म जी सर। सो मेरी गुजारिश ये है कि all the judgment so far says that a judge cannot be removed on the basis of a report which is not based on inquiry, and this is the case. Without inquiry, the Supreme Judicial Council has submitted a report in which they have recommended the removal of the judge, and therefore that is clearly an unconstitutional void non-est order.
About what Lordship was saying, उसके बारे में मेरी गुजारिश ये है कि प्रोसीडिंग्स में शो कॉज नोटिस हुआ एक, उसके 2 दफ़ा, पहला प्रिलिमिनरी रिप्लाई फिर एडिड रिप्लाई ये हुआ। उसके बाद एक एप्लीकेशन मैंने दी जिसमें मैंने कहा कि अगर अव्वल तो ये एड्रेसिंग ए बार एसोसिएशन इज नॉट ए मिसकॉन्डक्ट, बट इन केस यू वांट टू होल्ड इंक्वायरी प्लीज होल्ड इट इन ओपन कोर्ट। वो जजमेंट वो भी मैंने दिखा दिया। उसके बाद उससे 2 दिन बाद जब हेयरिंग हुई उसमें ये सारे सवाल आए और उसमें हमसे ये पूछा गया कि हाँ इंक्वायरी है, हमने बिल्कुल ये की है, ठीक है। नहीं एक सेकेंड। सो देयर वर 2 रेफरेंसेस, एक में अलाउ हो गई आपको ओपन और दूसरे में नहीं अलाउ हुई। नहीं, दूसरे में तो आपने कहा था आपने दरखास्त दी थी ना ओपन के लिए। सर वो तो ओपन क्वारी का तो प्रेसिडेंट बन चुका था, ओपन क्वारी का तो प्रेसिडेंट हो चुका था। अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि उसमें इंक्वायरी ओपन नहीं हुई थी, मैंने रिक्वेस्ट की थी। उसमें नहीं हुई, तो एक में किया और एक में नहीं किया। इसमें नहीं किया। फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है कि आफ्टर इसमें तो इंक्वायरी सिरे से नहीं हुई ना, उसमें नहीं मैं अब इंक्वायरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अब कह रहा हूँ प्रोसीडिंग्स के वो प्रोसीडिंग्स ओपन करें जी, वो इन कैमरा ना करें। एक में तो आपकी दरखास्त अलाउ हो गई जी आप कह रहे हैं बिल्कुल, वो रेफरेंस नंबर 242 में 242, मगर इस केस में इसका रेफरेंस नंबर क्या था? मौजूदा रेफरेंस। हाँ, इसमें आपने कहा नहीं हुई। इसमें तो इंक्वायरी नहीं हुई सर। क्या इंक्वायरी इज अ सेपरेट थिंग, ओपन प्रोसीडिंग्स की बात कर रहा हूँ। ओपन प्रोसीडिंग्स देखो, प्रोसीडिंग्स इंक्वायरी की होनी थी ना, इसमें सिरे से इंक्वायरी नहीं हुई। नहीं वो एक अलग पॉइंट है, प्रोसीडिंग्स ओपन हुई या नहीं हुई? उस एप्लीकेशन पे कोई ऑर्डर नहीं हुआ, यानी जितनी प्रोसीडिंग्स। इसका नंबर क्या है रेफरेंस का, ये वाली मौजूदा का? 347। जितने ठीक है, समझ गया ओपन नहीं हुई। Got it. ठीक है, खत्म। Can we ask Mr. Salahuddin? We want to wrap it up. Mr. Salahuddin, you've been hearing everything. I was not able to be to Islamabad because of lack of availability. What is the way forward? Address that point only. My lord, my submission is that the report and the notification is to be set aside on the ground of being malafide in law. Please tell us the way forward. Yes, sir. My submission is that it cannot be remanded to the SJC. The SJC's scope is limited under Article 209. However, this court, if it considers fit, and I would urge that it Who do you represent? Who do you factual merit. एक second ठहरिए ना, who do you represent? My lord, the Bar Association, Karachi Bar Association, and the So you basically you don't want the truth to come out. No, sir. Yes. In fact, my petition is. No, you are saying. Please hear us. You are saying that the relief should be given to the petitioner, but the people of Pakistan should be kept in the dark because they can't handle the truth. So why can't it be remanded? Why are you saying it can't be remanded? No, not at all, sir. I'm not saying that it should not be investigated. My submission is that the proper forum would either be this court itself or a commission appointed. We are not seeking your opinion. We are seeking some legal response. In my opinion, that doesn't help us, does it? Why can't it be remanded? It is because of the language of 209 itself, sir. Where does it suggest that? In fact, Mr. Hamid Khan has just cited a case where it was remanded, the matter was remanded. इसमें ये जो केस इन्होंने रेफर किया है इसको डिस्कस कराएं। I'm not arguing. It cannot be remanded. If Mr. Shafik Siddiqui was still now. We can't. Voice is gone. 48. नहीं से पूछ रहे ना, पढ़ेंगे ना। So the council to recommend his removal. Therefore, it does not have then the jurisdiction under 2096.
So the remand right now cannot be done. It could have been done 2 years ago. But right now, the remedy is that, and certainly those allegations need So you mean to say, you mean to say, on account, there is a well-settled principle that no one should suffer as a consequence of act of court. So you're saying because the court delayed the matter for 2 years, the petitioner's valuable right has been taken away from him. Is that your argument? We can't hear you. You're not speaking clearly. करें ना ठीक इसको. That the civil servants actual tenure has ended. Civil servant को आपने जज बना दिया. नहीं सर, मगर अब आप please don't. Disciplinary proceedings का principle तो वही है सर. No, it's not. Please, no, don't do this. If you're reducing a constitutional office to the level of a bureaucratic thing and saying the same principle applies, with respect, I will not agree with you. My submission is that the stigma around the person's reputation caused by wrongful removal, that is something that he is entitled to remove, even if he has finished his age of service. It is the same principle which your lordships entertain appeals against convictions, even when Mr. Salahuddin, please, Mr. Salahuddin, please focus on the Constitution. Mr. Ahmed Khan has read 2095, which says inquiry, then 2096, which talks about inquiry, and you are saying there's no need for an inquiry because he's retired, he's attained age to 62, so even if SJC did not comply with the Constitution, so let him suffer. Yes, sir. What I am saying this court is to set aside the report of the Supreme Judicial Council and the President's notification on account of being without jurisdiction and we are asking you, can it be remanded or not? We're not asking you, can it be set aside? My submission is the reason the factual allegations cannot be investigated anymore. सुप्रीम कोर्ट में साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर समाअत जारी है। और अब आपको बताएं कि आम इंतखाबात को साफ शफाफ बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर के बल्दियाती और कैंट बोर्ड्स के तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए। बल्दियाती इदारे सिर्फ रोज़मर्रा के उमूर निपटाएंगे। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कैंट बोर्ड्स के बल्दियाती इदारों के तरक्याती फंड्स इंतखाबी अमल की तकमील तक बंद रहेंगे। अहम तरीन खबर से अपने नाजरीन को यहाँ आगाह कर रहे हैं कि बल्दियाती के फंड्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुंजमद कर दिए गए हैं। आम इंतखाबात को साफ शफाफ बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर के बल्दियाती और कैंट बोर्ड्स के तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए हैं। बल्दियाती इदारे सिर्फ रोजमर्रा के उमूर निपटाएंगे। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कैंट बोर्ड्स के बल्दियाती इदारों के तरक्याती फंड्स इंतखाबी अमल की तकमील तक बंद रहेंगे। अहम इकदाम सामने आया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। आम इंतखाबात को साफ शफाफ बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर के बल्दियाती और कैंट बोर्ड्स के तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए हैं। बल्दियाती इदारे सिर्फ रोजमर्रा के उमूर निपटाएंगे। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कैंट बोर्ड्स के बल्दियाती इदारों के तरक्याती फंड्स इंतखाबी अमल की तकमील तक बंद रहेंगे। आम इंतखाबात की जानिब से आम इंतखाबात के हवाले से आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से वाज़ेह तौर पर आम इंतखाबात को साफ शफाफ बनाने के लिए भरपूर कोशिशों का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन ने अहम इकदाम उठाते हुए मुल्क भर के बल्दियाती और कैंट बोर्ड्स के तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए हैं। बल्दियाती इदारे सिर्फ रोज़मर्रा की उमूर निपटाएंगे, वाज़ेह कर दिया गया है। आपको बताएं कि सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कैंट बोर्ड्स के बल्दियाती इदारों के तरक्याती फंड्स इंतखाबी अमल की तकमील तक बंद रहेंगे। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे इरफान सदोजई से। इरफान, मजीद बताइएगा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो नोटिफिकेशन निकाला गया है उसमें मजीद क्या कहा गया है? जी, इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर के बल्दियाती और कैंट बोर्ड के जो तरक्याती फंड्स हैं वो मुंजमद कर दिए हैं। और जो सूबाई बोर्ड हैं जिनमें सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान के जो कैंट और बल्दियाती इदारे हैं इनके जो तरक्याती फंड्स हैं उन्होंने कहा कि इलेक्शन की तकमील तक रहेंगे और जो रोजमर्रा के उमूर हैं बल्दियाती इदारे वो निपटा सकेंगे। बल्दियाती इदारों के हवाले से उन्होंने मजीद इसमें कहा है कि जो इलेक्शन तक जो सफाई का काम है और जो सैनिटेशन का काम है
वो काम करते रहे और किसी नई स्कीम का इजरा या टेंडर नहीं कर सकेंगे। जिनका ऐलान पहले से हो चुका है, इंतखाबात के शेड्यूल से पहले जिन कामों का आगाज किया गया है वो तरक्याती काम जारी रहेंगे, लेकिन कोई नए तरक्याती मंसूबे या नए काम शुरू नहीं कर सकेंगे। और जो बल्दियाती इदारों की जो तरक्याती फंड है उनके इजरा पर भी उन्होंने कहा है कि जो साफ और शफाफ इलेक्शन है इन पे असरअंदाज हो सकती है और इस वजह से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी बहुत शुक्रिया इरफान सदोसई अपडेट करने के लिए। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से वोट कास्ट करने की दरखास्त सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को मौसूल नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक पोस्टल बैलेट के जरिए वोट कास्ट करने की आखिरी तारीख 22 जनवरी थी। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे उमैद अली से। उमैद बताइएगा, पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने की तारीख गुजर चुकी है, तो क्या बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे? जी देखें, बिल्कुल ये आम इंतखाबात 2024 में जो जेल में मौजूद कैदी हैं उनकी तरफ से वोट कास्ट करने का मामला है। इस हवाले से जो हमारे जराए हैं अडियाला जेल के अंदर उनसे हमारी बात हुई है। उनका यही कहना है कि बानी पीटीआई की तरफ से वोट कास्ट करने की दरखास्त सुप्रीडेंट अडियाला जेल को मौसूल नहीं हुई, ना ही शाह महमूद कुरैशी की तरफ से वोट कास्ट करने की दरखास्त मौसूल हुई है। ताहम जो इलेक्शन कमीशन हुकाम है उनके मुताबिक पोस्टल बैलेट के जरिए वोट कास्ट करने की आखिरी तारीख 22 जनवरी थी, जो कि कल थी। अब वो डेट गुजर चुकी है। ताहम जो अडियाला जेल में इस वक्त कैदी हैं उनकी तादाद लगभग 7000 के करीब है और उनमें से 25 से 30 वोट कास्ट करने की दरखास्तें सुप्रीडेंट अडियाला जेल को मौसूल हो चुकी हैं और ये तमाम दरखास्तें कानून के मुताबिक मुतल्लिका जो रिटर्निंग अफसर हैं उनको भिजवा दी गई हैं। इलेक्शन एक्ट जो 2017 है वो कैदियों को पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने का हक फराहम करता है। इस हवाले से जो डेट है 22 जनवरी वो कल गुजर चुकी है। अब इस हवाले से देखना यह है कि इसमें मजीद क्या डेवलपमेंट होती है। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। अभी तक जो है ना जो कल डेट थी उसके मुताबिक बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी ने अभी तक दरखास्त नहीं दी। जी बहुत शुक्रिया उमैद अली अपडेट करने के लिए। सलमान अकरम राजा ने खुद को आज़ाद उम्मीदवार करार देने का इलेक्शन कमीशन का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे राना बिलाल से। बिलाल, सलमान अकरम राजा ने दरखास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है? आपको बताएं कि सलमान अकरम राजा ने खुद को आज़ाद उम्मीदवार करार देने का इलेक्शन कमीशन का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। सलमान अकरम राजा ने दरखास्त समीर खोसा एडवोकेट की वसातत से दायर की है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सलमान अकरम राजा ने खुद को आज़ाद उम्मीदवार करार देने का इलेक्शन कमीशन का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। सलमान अकरम राजा ने दरखास्त समीर खोसा एडवोकेट की वसातत से दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली केस में कासिम सूरी को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कासिम सूरी को अपने दस्तखत के साथ खुद जवाब जमा कराने की हिदायत भी कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कासिम सूरी मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने। हुक्म इम्तना लेकर पूरी असेंबली मुद्दत को एंजॉय किया। अब कह रहे हैं असेंबली खत्म और केस गैर मौसर हो गया। कासिम सूरी पर क्यों ना आइन शिकनी की कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। हुक्म इम्तिला लेने के बाद मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया गया। अदालत ने कासिम सूरी का केस मुकर्रर ना होने और स्टे बरकरार रखने पर रजिस्ट्रार को नोटिस करते हुए 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली है। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत के बाइस जेर इलाज मरीजों के अहले खाना रुल गए हैं। महकमा सेहत के डायरेक्टर जनरल ने सेक्रेटरी हेल्थ के नाम मरासला जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत के बाइस मरीज के अहले खाना जो हैं वो रुल गए हैं। महकमा सेहत के डायरेक्टर जनरल ने सेक्रेटरी हेल्थ के नाम मरासला जारी कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा से यह खबर है कि सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत मौजूद है, जिसके बाइस जेर इलाज मरीजों के अहले खाना रुल गए हैं। महकमा सेहत के डायरेक्टर जनरल ने सेक्रेटरी हेल्थ के नाम मरासला जारी कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं डॉन न्यूज की नुमाइंदा ताइबा खान से। ताइबा, बताइएगा डीजी हेल्थ की जानिब से जो मरासला लिखा गया है उसमें क्या मुतालिबा है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अस्पतालों में किल्लत है। इन तमाम अस्पतालों में मामूल की दवाइयाँ दवाइयों की तो किल्लत है, लेकिन जो इमरजेंसी की अद्वियात है वो भी जिसकी वजह से जो मरीजों की लवाइकीन है उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो है वो रुल गए हैं अद्वियात की मसले की वजह से।
जिसके ऊपर महकमे सेहत के डायरेक्टर सेक्रेटरी हेल्थ के नाम पे महाराष्ट्र भेजा। सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए 9 अरब रुपए सरकार ने ये कहा है कि नहीं है। अदवियात की खुदाई की कीमत में जब अद्वियात की किल्लत के बाइस मरासला जारी कर दिया गया है। अपडेट कर रही थी ताइबा खान, आपका शुक्रिया। यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। डोंट वरी, राइट साहब राइट कर देगा। ओलिविया हेयर कलर का 40 साल तजुर्बा, महारत और एतमाद। हर एक के बस की बात नहीं, सबसे ज्यादा नेचुरल एंड फैशन शेड्स जो दे मेरे बालों को नया रंग, नई जान। और फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड जो ओलिविया की सुपीरियर क्वालिटी का सबूत है। मेरे पास ओलिविया हेयर कलर के अलावा कोई चॉइस ही नहीं। ओलिविया, शुक्रिया। जैज मंथली यूट्यूब एंड सोशल ऑफर पाएं 15 GB इंटरनेट, 50 दूसरे नेटवर्क मिनट्स, 500 जैज मिनट्स और SMS सिर्फ 380 रुपए की डिस्काउंटेड प्राइस में। *620# कोड मिलाएं। सुपर नहीं तो 4G नहीं। जैज सुपर 4G। मिर्चों से मसूड़ों में जलन है कोई हल? लौंग, नीम, यूकलिप्टस और पुदीने वाला कोलगेट हर्बल मुंह में ठंडक पहुंचाए, दांत मसूड़े सेहतमंद बनाए नेचुरली। एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से मजबूत, जड़ से मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। पहली बार विटामिन सी और ग्लिसरीन के साथ नया लक्स जो जिल्द को निखारे, नमी दे और दे चांद सा रोशन चेहरा। लक्स फेस ऑफ द ईयर माया अली। थैंक यू लक्स, पर यह अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, यह है इन सभी खूबसूरत चेहरों का जिनकी रोशनी से दुनिया रोशन है। लक्स, हमारा बेस्ट सोप, दे चांद सा रोशन चेहरा। चाहे कुछ भी हो जाए, बाल रहे फिंगर कोम रेडी विद पाम ऑलिव नेचुरल शैम्पू। बालों को बनाए इतना स्मूथ और मैनेजेबल कि आप करें बस फिंगर कोम। अलबरका बैंक पाकिस्तान ने पार्टनर बनाया है चैंपियंस को, ताकि अब मिलकर बढ़ें पाकिस्तान के एक और सुनहरे दौर की तरफ। दुनिया के 14 ममालिक के साथ पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग की जदीद सहूलियात फराहम कर रहा है। मैं हूं हमजा खान और मेरा पार्टनर है अलबरका बैंक पाकिस्तान। योर पार्टनर बैंक। क्या बना रही हो? कश्मीरी चाय। कश्मीरी चलो 1-2 दिन में तो बन ही जाएगी। नेस्ले एवरीडे कश्मीरी चाय, सिर्फ खोलें, घोलें और मजा उठाएं। अब 180 ग्राम पैक में भी अवेलेबल इन स्टोर्स। पाकिस्तान जितने खाने बनाता है, नया ब्राइट उतने ही दाग मिटाता है। क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। मेरे बाल आपकी तरह घने और मजबूत कैसे होंगे? इधर आओ, मेरी तरह बालों में प्याज लगानी पड़ेगी। मुश्किल है, पहले छीले, फिर काटे, फिर इतनी देर तक लगा कर रखे। हाँ, मेहनत तो बहुत लगेगी, पर इसकी नया लाइफ बॉय नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू, इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला। दे घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। हर सुबह इन्हें लंच बॉक्स में देती हूँ ऑलपर्स फ्लेवर्ड में। ऑलपर्स दूध की भरपूर ग़िज़ाइयत, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, मैंगो और बादाम ज़ाफ़रान के मजेदार फ्लेवर्स में। आज मैं इसे कुछ कह क्यों नहीं रही, ताकि ये कल खुद उठना सीखे। नेस्ले नीडो स्कूल एज न्यूट्रिशन और आपकी यही चॉइसेस इनको हर बढ़ते स्कूल एज चैलेंज के साथ बढ़ने में मदद करती रहेंगी। नीडो, न्यूट्रिशन टू ग्रो फ्रॉम नेस्ले। मेरे बाल आपकी तरह घने और मजबूत कैसे होंगे? इधर आओ, मेरी तरह बालों में प्याज लगानी पड़ेगी।
मुश्किल है, पहले छीले फिर काटे फिर इतनी देर तक लगा कर रखे। हाँ, मेहनत तो बहुत लगेगी, पर इसकी नया लाइफ बॉय नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू। इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला। दे घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। यूफोन 4G सुपर कार्ड, जिससे मिले शॉक ऐप बिल्कुल फ्री, 20 GB और नॉन स्टॉप कॉलिंग मिनट्स के साथ। तो अभी *899# डायल करो। न्यू स्ट्रॉन्गर पेप्सी, क्या टेस्ट है यार। अब डेटा मिले एक्सट्रीम विद मंथली सुप्रीम। लगाएं और पाएं पूरे 20 GB डेटा और इसके साथ 500 अदर नेटवर्क मिनट्स और 5000 जोंग मिनट्स और SMS सिर्फ 999 रुपए के लोड में। अभी *3030# मिलाएं। जोंग 4G। एक बार फिर आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में साबिक जज शौकत सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर समाअत जारी है। The council shall have inherent powers to adopt any procedure specific to the inquiry which is considered by council to be just and proper in the circumstances। और उसके बाद मैं आपसे कहूंगा जरा पेज नंबर 48 पे इम्प्यून्ड ऑर्डर जो है इसका पैराग्राफ नंबर 15 पढ़ लीजिए जरा आप। पेज नंबर, ये हामिद खान साहब की जो पेपर बुक है इसका पेज नंबर 48 और पैराग्राफ नंबर 15। जी सर, ये पढ़िए जरा। आफ्टर हियरिंग द लर्नेड अटॉर्नी जनरल, जी, आफ्टर हियरिंग द लर्नेड अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान एंड जस्टिस सिद्दीकी एट हिज लर्नेड काउंसिल at great length, the matter was adjourned by the council to 8/10/2018 for deliberating upon the respective submissions and to determine the way forward, keeping in view the peculiar circumstances of the matter at hand. The council met again on 8/10/2018 and the entire matter was deliberated upon from diverse angles. It was pertinently observed by the council that Article 2095 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan authorizes the Supreme Judicial Council to inquire into conduct of a judge of the Supreme Court of Pakistan or of a High Court upon a direction of the President of Pakistan or on basis of an information received from any source or on its own motion, and Supreme Judicial Council Procedure of Inquiry 2005 prescribes the mode of conducting an inquiry. I think if your lordship, if I may skip a few and go to the about 10th last line of the next page. जी, आप 10th last line 4th लाइन से पढ़े। इनका जजमेंट का रेफरेंस दिया गया है। अभी जो हामिद खान साहब ने जो रेफर किया है इसके जजमेंट का रेफरेंस दिया है इसमें। ये पढ़े आप, इसी कंटिन्यू करें इसको आप। जी सर, जी। इन द केस ऑफ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी एंड in the case of Justice Shaukat Aziz Siddiqui, the Supreme Judicial Council procedure of inquiry was held by the Supreme Court of Pakistan. KPLD 2018 Supreme Court 538 इसका रेफरेंस है। जी, कंटिन्यू करें। जी, to be constitutionally valid and compliant with universally accepted principles of due process. In the present matter, initial scrutiny of information was conducted in terms of para 7 of the said procedure of inquiry. ये जो मैंने पढ़ा था। A discussion and inquiry into the information was undertaken in terms of para 8 of the procedure of inquiry. A decision was taken to proceed against Justice Siddiqui and a show cause notice was issued to him along with the supporting material calling upon him to explain his conduct. And after receipt of his 2 replies, the council had met and they decided to proceed further with the matter in terms of para 9 of the procedure of inquiry. And thereafter, the Attorney General for Pakistan was required to conduct the proceedings in terms of para 10 of the procedure of inquiry. After that stage of the proceeding, the said procedure of inquiry remains silent regarding the procedure to be adopted or followed in a given inquiry, and the council is extended the necessary discretion to adopt any procedure which may be found by it to suit the requirements of the inquiry. Such discretion of the council is manifestly explicit from the contents of para 8(7) of the procedure of inquiry, according to which, without prejudice to the foregoing, the council shall have inherent powers to adopt any procedure specific to the inquiry which is considered by the council to be just and proper in the circumstances. As the proceeding against Justice Siddiqui were based squarely upon the making of the above mentioned speech by him and the multiple and pervasive allegations leveled by him. इसमें वो बताना चाह रहे सलाउद्दीन साहब, इसमें बताना चाह रहे कि हमने इंक्वायरी कर ली है। इनका कहने का ये मकसद है कि इंक्वायरी हो चुकी है, हमने अपना प्रोसीजर अडॉप्ट कर लिया। आपसे एक सवाल, आपकी बात अगर तस्लीम की जाए कि इनके हद तक सेटिस्फाइड कर दें
इनका स्टेटस बहाल हो जाएगा। और दूसरे पोर्शन में जो इंक्वायरी आप कहते हैं वो अलहदा से कंडक्ट हो। सपोज हम आपकी बात मान लें, इंक्वायरी कंडक्ट होती है, उस इंक्वायरी में ये हम ही करते हैं और ये साबित होता है कि इनकी एलिगेशन गलत थी, फिर क्या होगा? इनका स्टेटस वापस लिया जाएगा? कौन लेगा? सर इसमें फिर ये होगा कि there would be it would be go then before the relevant criminal court perhaps, because there would be a question of perjury, there would be a question of the ex-judge of the High Court will face the criminal charge without the intervention of the Supreme Judicial Council. My lord, judges are not above the law. No, the Supreme Judicial Council, they have to face the consequences through Supreme Judicial Council. My lord, with respect, if someone commits the act of criminal defamation, no, we don't want these analogies which are not applicable to Supreme Judicial Council or to judges. Let's stay focused on the Supreme Judicial Council, on judges and the Constitution. We don't need any analogies. If you can throw any further light, please continue. No. My lord, I'm not making an analogy with respect, because please let it go. If you want to contribute, we don't want these analogies. My lord, this is what is the statement. If the statements are false, then it's not a matter of analogy, then there are consequences for false statements on both sides. I don't. If I was to deconstruct what you're saying, first of all, it's a never-ending thing ever. Let's take logically what you're saying, as what my lord had put to you, that if the petitioners this order is set aside on the basis that no inquiry was held, and subsequently a commission, okay, it's magically formed, we go along with that, and the commission, where is the commission? It's not a court of law, it's not a constitutional body, it's a sub-statute body, naturally, or a body created by an order of a court. It can either be one or the other, not a third one. That finding will prevail over the Supreme Judicial Council, will prevail over the Supreme Court, and on the basis of this inquiry is held either pursuant to order of the court or the Supreme Judicial Council, a judge can go to jail for perjury. This is the sum total of the argument. I don't follow this. Let me explain myself, sir. It will not, obviously, the report of the commission too does not automatically affect. First tell us who creates this commission. It is formed under the Commissions of Inquiry Act, and if your lordship sees in the act, if a commission of inquiry determines something that this judge had not stated the truth earlier, he will be persecuted for perjury. My lord, it prepares a report. That report is then forwarded to the relevant body. भैया आप ये बार-बार ये चीजें कह रहे हैं ना, vagueness, relevant body. We are a highest court. We want to know what is this body. Each word you must. Criminal investigation agency, sir. So we are then handing over the fate of judges to some SHO or sub-inspector in police. If a judge makes a false allegation, he defames someone, commits libel, and it is found to be false, then he should not expect to. Saudi Sahib not quite getting traction with me, at least. 209 के अलावा कोई और बात करें, या if you want to file, refer to. You are not, sorry, but you're not referring to any precedent, any law, these are just opinions stated at the bar. कुछ और हमें बताए ना, कुछ चीज तो बताए ना, कुछ आगे बढ़ने वाली बात. अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा ये जो पैसेज आप ऐसा करें, आप अपना राइटिंग में सबमिशंस कर दें, बिकॉज हमें समझ नहीं आ रही बात, एंड we are maybe you have got better ideas, you can put them in writing and we'll consider them. May I just summarize the... No, please do so in writing, because you will carefully think out everything, and I'm sure it will be, because if it's also 10 minutes to 2, आप हमें writing में दे दें, we will certainly consider it.
जरा आर्टिकल 2095 मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये कह रहा है कि इफ ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी सोर्स द काउंसिल और द प्रेसिडेंट इज ऑफ द ओपिनियन that a judge of the Supreme Court or of a High Court may be incapable of properly performing the duties of his office by reason of physical or mental incapacity or may have been guilty of misconduct, यानी कि 2095 का A या B दोनों में से कोई एक भी अगर अप्लाई करेगा तो 209 अप्लाई कर जाएगा, यानी कि लफ्ज इन्होंने और इस्तेमाल किया है लॉ मेकर्स ने। बात हुई इंक्वायरी के हवाले से तो बड़ी बात हुई और हमने नोट भी करी, लेकिन मिसकंडक्ट के हवाले से कोई एक बात भी कोर्ट में नहीं की गई। टॉकिंग फॉर माई सेल्फ, ठीक है जी सर। तो मिसकंडक्ट के हवाले से अगर देखा जाए तो ये जज साहब जो थे जिन्होंने के जो बातें तकरीर में करी हैं, डोंट यू थिंक दैट दिस फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ मिसकंडक्ट एज पर आर्टिकल 2 जो कि कहता है कि केयरफुल टू प्रेजेंट डिग्निटी ऑफ द कोर्ट, और आर्टिकल 9 जो कि ये कहता है कि ही शुड वर्क फॉर द इंटेग्रिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ जस्टिस। नाउ व्हाट आर द इंस्टीट्यूशन ऑफ जस्टिस? इंस्टीट्यूशन ऑफ जस्टिस आर हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट्स। तो इन दो आर्टिकल्स के हिसाब से आपका क्या ख्याल है कि ये जो पिटिशनर साहब हैं ये मिसकंडक्ट के जुमरे में नहीं आते हैं? अगर थोड़ी देर के लिए हम मान भी लें कि इंक्वायरी वाला एस्पेक्ट जो है वो रह गया था सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से, लेकिन ये जो एस्पेक्ट मिसकंडक्ट का है वो स्क्वायरली अप्लाई नहीं करता है क्या पिटिशनर के केस के अंदर, स्पेशली इफ व्यूड अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 9 ऑफ दीज रूल्स? तो इस एस्पेक्ट के ऊपर हमें कोई असिस्टेंस नहीं मिली है माजरत के साथ। इंक्वायरी के हवाले से तो जरूर हमें मिली है कि ये इंक्वायरी नहीं हुई और इन लोगों को बुलाया नहीं गया, लेकिन वी हैव नॉट बीन प्रॉपर्ली असिस्टेड, टॉकिंग फॉर माई सेल्फ, विद रिगार्ड टू द एस्पेक्ट ऑफ मिसकंडक्ट जो कि आर्टिकल 209 के बी के अंदर फॉल करता है और जो कि साफ साफ कहता है कि अगर मिसकंडक्ट होगा तो आर्टिकल 209 लगेगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है सलाउद्दीन साहब? मैं जरा ऐड कर दूं माय लॉर्ड की बातों में जी। क्या जो तकरीर की थी वो मिसकंडक्ट में आती थी? यस। उसके लिए इंक्वायरी जरूरी थी? यस सर, मेरी दो सबमिशंस होंगी इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, if what he said in his speech was factually incorrect, then it was misconduct. If it was not factually incorrect, if he had correctly stated the facts, then it was not misconduct, number one. Number two, sir, the other reason why it was necessary to assess whether the allegations were true or untrue was because it would affect the proportionality issue. If, for example, all these allegations were correct and the only grievance was कि ये आपने public speech में नहीं बातें करनी थी, तो then perhaps the SJC, the proper course for the SJC would not to be to remove the judge altogether. The punishment also has to meet the crime and doctrine of proportionality. जनाब ने अपनी कई judgments में नहीं भाई सलाउद्दीन साहब, I understood your first point. As far as your second point is concerned, there is no other option. ये तो नहीं है कि इस साल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी या दो withholding pays हो जाएंगी. Either you remove a judge or you don't remove a judge. Full stop. There is no proportionality involved in 209 at all. I don't know where you're getting this proportionality element and introducing it into the SJC. Rap on the knuckles, be a good boy, don't do it again. You know. सुप्रीम कोर्ट में साबिक जज शौकत सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर समाअत इस वक्त जारी है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। डोंट वरी, ब्राइट साहब ब्राइट कर देगा।
एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से मजबूत जड़ से मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। पाकिस्तान जितने खाने बनाता है, नया ब्राइट उतने ही दाग मिटाता है। क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से मजबूत जड़ से मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। यूफोन 4G सुपर कार्ड, जिससे मिले शॉक ऐप बिल्कुल फ्री, 20 GB और नॉन स्टॉप कॉलिंग मिनट्स के साथ। तो अभी *899# डायल करो। कपड़े गरम पहनाता आया, जाड़ा आया, जाड़ा आया। कैसी हवा है, जरासीम का हमला, घर 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 घर। खांसे है देखो बच्चे, खू 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 घर घर घर। सर्दियों का मौसम बन सकता है कई बीमारियों का सबब। डेटॉल सोप के रोजाना इस्तेमाल से सर्दियों में बच्चों को 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से शील्ड करना है आसान। मिर्चों से मसूड़ों में जलन है कोई हल? लौंग, नीम, यूकलिप्टस और पुदीने वाला कोलगेट हर्बल मुंह में ठंडक पहुंचाए, दांत मसूड़े सेहतमंद बनाए नेचुरली। क्या आपको चाहिए शाइनी बाल? सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स के साथ विटामिन ई का सुपर मिक्स, जो दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। अब बाल करें शाइन ऑल द टाइम विद सनसिल्क ब्लैक शाइन। पाकिस्तान जितने खाने बनाता है, नया ब्राइट उतने ही दाग मिटाता है। क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से मजबूत जड़ से मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। जैज मंथली यूट्यूब एंड सोशल ऑफर पाएं 15 GB इंटरनेट, 50 दूसरे नेटवर्क मिनट्स, 500 जैज मिनट्स और SMS सिर्फ 380 रुपए की डिस्काउंटेड प्राइस में। *620# कोड मिलाएं। सुपर नहीं तो 4G नहीं। जैज सुपर 4G। Guys, let's meet Hania today. Hi. आखिर कैसे है आपकी स्किन so beautiful? ब्यूटीफुल स्किन है जर्म फ्री स्किन। जर्म फ्री? कौन सा ब्यूटी सोप यूज करती हैं? मुझे चाहिए मोर देन ब्यूटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम पिंपल कॉजिंग जर्म्स, स्किन रहे सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइज्ड। बट हानिया, इतना सब कुछ कहाँ मिलेगा? ट्राई डेटॉल स्किन केयर। इसका स्किन केयर फॉर्मूला दे पिंपल्स फैलाने वाले जर्म से हिफाजत, और इसके एडेड मॉइस्चराइजर्स रखें स्किन को सॉफ्ट महकती खुशबू के साथ। डेटॉल स्किन केयर, क्योंकि ब्यूटीफुल स्किन है जर्म फ्री स्किन। आज पाकिस्तान के हर 10 में से 9 बच्चों की खुराक में आयरन की कमी है। लेकिन मैं वो माँ नहीं जो अपने बच्चे में कमी आने दूं। इसलिए मेरा एतमाद नेस्ले बुनियाद आयरन प्लस रोजाना, जिसमें मौजूद आयरन प्लस और एक ग़िज़ाई अज्जा आयरन की कमी को पूरा करने में मदद करें। अब ये पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि जब इरादे मजबूत तो आगे बढ़ते कदम और भी मजबूत। नेस्ले बुनियाद आयरन प्लस, बेहतर जिंदगी की और भी मजबूत बुनियाद। आज मैं इसे कुछ कह क्यों नहीं रही, ताकि ये कल खुद उठना सीखे। नेस्ले नीडो स्कूल एज न्यूट्रिशन, और आपकी यही चॉइसेस इनको हर बढ़ते स्कूल एज चैलेंज के साथ बढ़ने में मदद करती रहेंगी। नीडो न्यूट्रिशन टू ग्रो फ्रॉम नेस्ले। मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पढ़ना लिखना है, इल्म की राह
पर हमको यूं ही चलना है। I love the educators, I love the educators, I love the educators, I love the educators. The Educators, a project of Beacon House. मिर्चों से मसूड़ों में जलन है कोई हल? लौंग, नीम, यूकेलिप्टस और पुदीने वाला कोलगेट हर्बल मुंह में ठंडक पहुंचाए, दांत मसूड़े सेहतमंद बनाए नेचुरली। डॉन न्यूज आवरली क्लॉक के लिए ताउन किया है लौंग, नीम, यूकेलिप्टस और पुदीने वाला कोलगेट हर्बल, दांत मसूड़े सेहतमंद बनाए नेचुरली। हेडलाइंस के लिए ताउन किया है अम्मी मेरी पाकिस्तान की तस्वीर जीत गई। सुप्रीम कोर्ट में साबिक जज शौकत सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर समाअत। विफाकी कार्रवाई का इख्तियार खत्म करने वाले आफिया शेरबानो केस में अपील। अटॉर्नी जनरल ने शौकत सिद्दीकी केस के साथ अपील भी सुनने की तजवीज दे दी। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर वॉच डॉग नहीं, आइन साजों के बजाय बैलेंस को बरकरार रखना होगा। जुडिशल काउंसिल की मौजूदगी में कमीशन बनाने की क्या जरूरत है, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर के बल्दियाती और कैबिनेट बोर्ड्स की तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए। इलेक्शन का अमल मुकम्मल होने तक मुंजमद रहेंगे। इलेक्शन कवरेज के लिए गैर मुल्की सहाफ़ियों को 49 वीज़े जारी कर दिए गए। नई दिल्ली हाई कमीशन में 24 दरखास्तें वीज़ा के लिए ज़ेर गौर। नाअहली केस में कासिम सूरी ज़ाती हैसियत में तलब। कासिम सूरी आईनी बहरान की वजह बने, क्यों ना इनके खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पंजाब में नमूनिया ने नौज़ायदा बच्चों को निशाने पर रख लिया। 24 घंटे के दौरान मजीद 12 जिंदगियां निकल लीं। मरने वालों की मजमूई तादाद 194 तक पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की शदीद किल्लत। गवर्नर ने नोटिस ले लिया, वजीर आला को खत लिखकर फंड्स जारी करने की हिदायत। कराची एयरपोर्ट के करीब फ्लैट से मिलने वाली 5 लाशें पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले तमाम लाशों के नमूने कीमियाई तजज़िये के लिए लेबॉर्ट्री भेज दिए गए। कराची में मोटरसाइकिल के आगे और पीछे नंबर प्लेट्स न लगाने पर एक्शन शुरू। खिलाफ वर्जी करने वालों की मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गईं। पीपल्स पार्टी आज चिन्यूट में पावर शो करेगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। पिंडाल में कुर्सियां लगा दी गईं। बिलावल और आसिफा जियालो से खिताब करेंगे। नून लीग लाहौर के हल्के NA 130 में रैली निकाली गई। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए असली शेर मंगवा लिए। अहमदपुर शर्किया में नून लीग के जलसे की तैयारियां मुकम्मल। सिंध हाई कोर्ट में मुर्तजा भुट्टो कत्ल केस में पुलिस अफसरान की बर्रियत के खिलाफ अपील पर समाअत। पहली मरतबा मुर्तजा भुट्टो के बेटे जुल्फिकार जूनियर अदालत में पेश। पाकिस्तान का बरामदात $100 अरब तक बढ़ाने का मंसूबा। IMF का अगले 4 साल तक पाकिस्तानी बरामदात $40 अरब से भी कम रहने का तखमीना। पाक अफगान सरहद पर तुरखम बॉर्डर 10 रोज बाद तिजारत के लिए खोल दी गई। पासपोर्ट और वीजा की शर्त के बायस बंद किया गया था। जामशोरा के अर्थर नेशनल पार्क के करीबी गोठ में चीते का हमला। 10 से ज्यादा बकरियों को मार डाला। इलाका मकीनों ने जिद्दोजहद के बाद चीते को मार दिया। इसराइली फौज के हमलों में मजीद 200 फलस्तीनी शहीद। हमास ने जवाबी कार्रवाई में इसराइली फौज के जेर कब्जा इमारतों को धमाके से उड़ा दिया। 21 इसराइली फौजी हलाक। और ICC का वनडे टीम ऑफ द ईयर का ऐलान। कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर शामिल नहीं। राबिया का बेस्ट फ्रेंड, उसका कैमरा। वाव!
और कितना खींचोगी? अम्मी, दुनिया को पाकिस्तान की अलग तस्वीर दिखानी है, उसकी खूबसूरती की। जब तक दिखाऊंगी नहीं, रुकूंगी नहीं। मैं इसके ख्वाबों के बीच किसी को नहीं आने दूंगी, जरासीम को भी नहीं। इसीलिए लाइफ बॉय। बड़े ख्वाबों को दें लाइफ बॉय की बड़ी हिफाजत, जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत। अम्मी, मेरी पाकिस्तान की तस्वीर जीत गई। अस्सलामुअलैकुम, डॉन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना करीम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से आज NA 130 लाहौर में रैली निकाली जाएगी। इस मौके पर नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए असली शेर भी मंगवा लिए गए हैं। मज़ीद जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अदनान शेख से। जी अदनान, बताइएगा तफसीलात। आज बिल्कुल 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में हल्का NA 130 के अंदर बड़ी हलचल है और PP 174 के अंदर जो पार्टी कायदे नवाज शरीफ और मरियम नवाज है, उनकी आमद के सिलसिले के अंदर जो बिलाल यासीन है, उन्होंने असली शेर जो है ला के जहाँ पे रख दी है। और जैसे ही नवाज शरीफ यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जब रैली का आगाज होगा तो असली जो शेर हैं वो मैदान में लाए जाएंगे और बताया जाएगा कि लोग नवाज शरीफ ने बल्कि असली शेर भी यहाँ पर लाए गए हैं और इस जो है वो तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और जो लोगों की बड़ी गहमा गहमी यहाँ पर इस हल्के में मौजूद है। और क्योंकि नवाज शरीफ जो है लाहौर में जो है इस हल्के में काफी अच्छे बाद आ रहे हैं, तो लोग बड़ी बेताबी से इसका इंतजार भी कर रहे हैं और शेर के बाद जो है वो लोगों में दिलचस्पी बढ़ गई है। जी, बहुत शुक्रिया अदनान आपका। यहाँ आपको बताएं कि पंजाब में नमूनिया ने 12 बच्चों की जिंदगियां निकाली। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में भी नमूनिया में मुब्तला 2 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। ताज़ा तरीन इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे नौमान लियाकत से। नौमान, बताएगा इस हवाले से। देखिए जी, पंजाब भर में जो नमूनिया है इसने खतरे की घंटी बजा रखी है और सबसे ज्यादा ये नमूनिया बच्चों और मुअम्मर अफराद को अपनी लपेट में ले रहा है और हलाकतों की तादाद रोज बरोज बढ़ना शुरू हो चुकी है। अगर हम सिर्फ 24 घंटों की बात करें तो सुबह भर में नमूनिया की वजह से 12 हलाकतें हुई हैं और 491 नए केसेस सामने आए हैं। इसी तरह लाहौर के अंदर 2 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं और ये दोनों बच्चे हैं जिनकी हलाकतें चिल्ड्रन अस्पताल में हुई हैं और 230 नए केसेस सामने आए हैं। जो तिब्बी माहिरीन है, इनकी जानिब से यही बताया जाता है कि ये हलाकतें हर साल सर्दियों के अंदर इसी तरह रिपोर्ट होती हैं और इसकी वजह ये है कि बच्चे और खासकर मुअम्मर अफराद जो हैं वो सर्दी की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसकी वजह से नमूनिया का शिकार होते हैं और फिर क़ुव्वत मुदाफ़त कम होने की वजह से ये जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। माहिरीन की जानिब से ये भी तजवीज़ दी गई है कि एक फैक्टर इसमें यह भी है कि अक्सर जो लोग हैं वो बच्चों को नमूनिया से बचाव की वैक्सीनेशन नहीं करवाते, जिसकी वजह से भी ये केसेस बढ़ते हैं। इसके अलावा बच्चों की फौरी तौर पर वैक्सीनेशन का जो अमल है वो मुकम्मल करवाया जाए और स्पेशली जो बच्चे और मुअम्मर अफराद हैं इनको सख्त सर्दी के मौसम में बाहर ना ले जाया जाए ताकि ये घरों में रहें और महफूज रहें। जी, शुक्रिया नौमान आपका। कराची का रुख करेंगे, जहां पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिलों की पकड़ धकड़ पर शहरियों और ट्रैफिक पुलिस में तकरार शुरू हो गई है। ट्रैफिक पुलिस अफसरान बाला के अहकामात पर अमल कर रही है। दूसरी तरफ शहरी इस मुहिम से भी बेखबर दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, सदर एम्प्रेस मार्केट के करीब मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे आसिम खान, उनसे जान लेते हैं। जी आसिम, बताएगा, ट्रैफिक पुलिस ने ऐलान किया था कि आज से बगैर नंबर प्लेट्स मोटरसाइकिलें जब्त की जाएंगी। क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, क्या रद्द अमल आ रहा है? जी हाँ, जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस गुज़िश्ता 10 रोज़ से जो है कराची के शहरियों को वार्न कर रही थी कि गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की जो नंबर प्लेट्स हैं अगली और पिछली वो लगा कर रखें, क्योंकि कल जो है तारीख ख़त्म हो गई और आज से जो उनकी बाइकें भी जब्त की जा रही हैं और जब तक के लिए जब्त की जा रही हैं जब तक कि वो नंबर प्लेट लाकर मोटरसाइकिल पर नहीं लगाते। तमाम बहुत से शहरी इससे नावाकिफ़ हैं और यहाँ पर शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस उन्हें तंग कर रही है। एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी मोटरसाइकिल बंद की गई, इनसे पूछते हैं। सर, मुझे आ रहा था, मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ इन लोगों ने रोका है। रोकने के बाद इन्होंने ये कहा है कि भाई उतरो गाड़ी से। मैंने कहा, मैंने इनको बाइक के पेपर दिखाए, लाइसेंस दिखाया, बाकी कागजात जितने भी दिखाए, उसके बावजूद इन्होंने मुझे उतार के इन्होंने कहा कि भाई आपकी नंबर प्लेट नहीं है। मैंने कहा बैकअप नंबर प्लेट मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैंने इनसे कहा कि मैं लगा लूँगा नंबर प्लेट। नहीं, इन्होंने कहा नीचे नहीं नीचे उतरो, गाड़ी मेरी बंद कर दी है। ऐसो जो है यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं सेक्शन ऑफिसर, इनसे पूछते हैं क्या हिदायत हैं और मोटरसाइकिल सवारों की क्या शिकायत है। जी अस्सलाम वालेकुम, एसओ प्रेस मार्केट। ये गवर्नमेंट की ने एक पॉलिसी चलाई है कि जैसे पूरे पाकिस्तान में नंबर प्लेट दोनों साइड पे होनी चाहिए। ये आज से 10 दिन पहले हमने सिर्फ चालान शुरू किए थे 10 दिन के लिए। अभी आज से हुक्म मिला है कि
मोटरसाइकिलें डिटेन करें जिनके आगे नंबर प्लेट नहीं है या दोनों साइड पे नहीं है। आपने बात सुनी और सेक्शन ऑफिसर का बताना है कि डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से सख्त अहकामात हैं कि अगले हुक्म तक जो है ये कार्रवाई की जाए और आज से शहर भर में जो है ये कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। ट्रैफिक पुलिस ने जगह जगह नाके लगाकर मोटरसाइकिलों को रोकना शुरू कर दिया है। शहरी अपनी तरफ जो है एक शिकायत करते नजर आ रहे हैं, जबकि ट्रैफिक पुलिस जो है वो कानून पर अमलदारी के लिए अपने अफसरान की जानिब देख रही है। जी बहुत शुक्रिया आसिम आपका। कराची से ही खबर यह है कि सिंध रेंजर्स और वाटर कॉरपोरेशन की पानी चोरों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयों के दौरान पहली बार 14 करोड़ रुपए से जायद की रिकवरी कर ली गई है। आपको खबर दे रहे हैं महकमा खजाना के इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान अहद हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा पानी चोरों के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक क्या कार्रवाई की गई है और इस ऑपरेशन से मुतालिक भी बताइएगा। देखिए देखो, सिंध रेंजर्स की जो पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई है वो रंग ले आई है। वाटर कॉर्पोरेशन में तारीख में पहली बार हाइडन सेल में बड़ी रिकवरी सामने आई है। सिंध रेंजर्स और वाटर बोर्ड की मुश्तरका कार्रवाइयों के बाद नजायज में तेजी से सामने आए, क्योंकि शहर भर में जो जारी गैर कानूनी हाइडन से उसको मसमार किया। उसके बाद पहली दफा कराची वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से जो करोड़ों रुपए की जो है वो आमदनी सामने आई है। 14 करोड़ रुपए इस महीने रिकवरी हुई है, वाटर बोर्ड का दावा है, जबकि उनका कहना है कि इससे कबल भी जो 4 से 5 करोड़ 7 करोड़ रुपए आते थे, मगर हाइडन माफिया के खिलाफ जब से कार्रवाई हुई है और यहाँ पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो हाइडन जो है वो मसमार किए हैं, उसके बाद पहली दफा हाइडन की जो आमदनी है वो 14 करोड़ है। बहुत शुक्रिया इमरान तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबर आपको देंगे महकमा खजाना के स्पेशल सेक्रेटरी की जेर सदारत कराची के दौरान मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में 51 मुलाजमीन की डबल तनख्वाह लेने का इंकशाफ हुआ है और सिंध हुकूमत के 9 डॉक्टर्स ने FCPS करने के दौरान अब्बासी शहीद अस्पताल से वजीफा भी लिया है। तो यह हम तरीन अपडेट है जिसे अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। महकमा खजाना के स्पेशल सेक्रेटरी की जेर सदारत कराची के दौरान मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में 51 मुलाजमीन के डबल तनख्वाह लेने का इंकशाफ सामने आया है। डबल तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन से तनख्वाहें वापस ली जाएंगी। सिंध हुकूमत की जानिब से ये सिफारिश भी की गई है। अहम तरीन अपडेट है जिसे अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में 51 मुलाजमीन की डबल तनख्वाह लेने का ये इंकशाफ 9 डॉक्टर्स जो हैं FCPS करने के दौरान अब्बासी शहीद अस्पताल से वजीफा भी उनकी जानिब से लिया गया है। मज़ीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे खबर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। खबर बताया कि डबल तनख्वाह लेने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है अब तक? जी, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में 51 मुलाजमीन के डबल तनख्वाहें लेने का इंकशाफ हुआ है। सिंध हुकूमत के 9 डॉक्टर जो FCPS करने के दौरान KMC के अब्बासी शहीद अस्पताल से वजीफा भी लेते रहे, जबकि महकमा खजाना के स्पेशल सेक्रेटरी की सदारत में होने वाले इजलास में ये इंकशाफ हुआ है कि डबल तनख्वाहें लेने वाले मुलाजमीन जो हैं वो सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में भी काम कर रहे थे, जबकि KMC से भी तनख्वाहें ले रहे थे। अब इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया गया है और महकमा खजाना की जानिब से ये सिफारिश की गई है कि डबल तनख्वाहें लेने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहें जो वापस ली जाएं और इनके खिलाफ एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स के तहत कानूनी कार्रवाई की, ताकि आइंदा कोई भी सरकारी मुलाजिम डबल तनख्वाहें वसूल न कर सके। जी, बहुत शुक्रिया खबर आपका। लाहौर हाई कोर्ट से खबर यह है कि 9 मई मुकदमात में जमानतें खारिज करने के खिलाफ बानी PTI की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। मजीद जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे राना बिलाल से। राना बिलाल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी देखिए, साबिक चेयरमैन PTI की अबूरी जमानतें लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खारिज की थी, जिसे हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था और आज इस केस पर समाअत मुकम्मल होने के बाद लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने साबिक चेयरमैन PTI की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। जो साबिक चेयरमैन PTI के वकील है बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने ये दलाइल दिए कि साबिक चेयरमैन के तोशा खाना में गिरफ्तारी से कबल अदालत में पेश होते रहे और कुछ जमानतों में तो उनके दलाइल भी मुकम्मल हो चुके थे। ATC ने अदम पैरवी की बुनियाद पर जमानतें खारिज कर दी हैं, हालांकि ये जमानतों को मेरिट पर सुनने के बाद फैसला करना चाहिए था। दूसरी जानिब जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब है सैयद फराज अली शाह, उन्होंने साबिक चेयरमैन PTI की दरखास्तों की मुखालफत की और ये कहा कि इन दरखास्तों को खारिज किया जाए। जस्टिस सालिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने साबिक चेयरमैन PTI की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। बहुत शुक्रिया राना बिलाल, तफसीलात से आगाह करने के लिए। एक बार फिर से आपको बराह रास्त ले चलेंगे सुप्रीम कोर्ट, जहां पर साबिक जज शौकत अजीज की बरतरफी के खिलाफ अपील पर समाअत जारी है। नंबर 2 लिखें, the
consequence इसमें लिखते हैं whether that since in the interregnum that since during the pendency of CP number 76/2018 CP number so and so लिखते हैं was filed on कौन सी तारीख को फाइल हुई थी 76 October 2018 वो डेट ले लीजिएगा 18 October 2018 and the petitioner attained the age of 62 years 30th of June 2021 on 30 June 2021 comma the whether what if any what can now how can the matter now be attended to if the petition is to be allowed, okay, if he is to be granted allowed if he is to be granted relief, whether including whether the matter can be remanded to the Supreme Judicial Council. Anything else? Whether there was no need to conduct an inquiry by these SJC as the speech admittedly given by the petitioner in itself, making of the speech in itself constituted misconduct as defined in the judges वो पूरा नाम लिख दीजिए code of conduct. ठीक है? Anything else you want to add? Sir, in addition to response to these questions, I may kindly be allowed to give the propositions, my propositions. हमने लिखा amongst others, वो बाकी आप जो मर्जी लिखना चाहें, मगर ये चीजें अटेंड कर लें. अच्छा, full stop. हाँ, precedents भी दे दीजिएगा. हमें लिखने की जरूरत तो नहीं है ना? Everything. ठीक है. Comprehensive. So these three you attend to. The rest, whatever you want to add, we are not stopping you. But just keep it sort of more precise. Not, it shouldn't be legal drafting. It should be point to point. Thank you. Chale, thank you very much. It's been a learning experience also for us. जो ख्वाजा साहब, अच्छा हाँ, कितने within how much time to be given आपको? I think 2 weeks. If your lordship is हाँ, 3 हफ्ते दे दें. नहीं, legal issues है ना. Quite right. You know, we don't want to say something in a. अब इतना वक्त गुजर गया तो 1-2 हफ्ते अगर वो हमारे खान साहब नाराज ना हो कि 3 हफ्ते अब दे दिया. ठीक है, खान साहब 3 हफ्ते ठीक है? 3 हफ्ते ठीक है? सर 2 हफ्ते ही काफी होंगे सर. तो ख्वाजा साहब 3 मांग रहे हैं, 3 कर लें. वैसे भी ये इलेक्शन वाला हफ्ता तीसरा हो जाएगा ना फिर. ठीक. हाँ, तो ये इलेक्शन के बाद ही जाएगा मेरे ख्याल में. अच्छा, इसमें लिखते हैं कंसाइज स्टेटमेंट्स टू बी फाइल्ड विद इन 3 weeks. In case after judgment is reserved, however, in case after examining the concise statements and the available record, a further hearing is required, the court will convene. We don't know what you're going to say, and some of the things I have not read that were filed today and yesterday. Sure.
आपको बता रहे हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में साबिक जज की बरतरफी के खिलाफ अपील पर समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और ब्रिगेडियर इरफान राय को नोटिस दिया गया है हुक्मनामे के मुताबिक, और इस हवाले से हुक्मनामा इस वक्त लिखवाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जज शौकत अजीज बरतरफी का केस का फैसला महफूज कर लिया है। अहम तरीन अपडेट है जिससे अपने इन नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि इस हवाले से हुक्मनामा लिखवाया जा रहा है और तमाम फरीकैन के वकला तहरीरी जवाब देंगे। अगर जरूरत समझी तो केस दोबारा समाअत के लिए भी मुकर्रर कर सकते हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये अहम तरीन रिमार्क्स भी इस दौरान सामने आए हैं और इस हवाले से हुक्मनामा लिखवाया जा रहा है। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अपना जवाब जमा करवा दिया है, जिसपे आपको बताते चलें कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और ब्रिगेडियर इरफान रामे को नोटिस दिया गया है हुक्मनामे के मुताबिक। और आपको बताते चलें कि ख्वाजा हारिस पेश हुए और जवाबात जमा करवाए, हुक्मनामे का ये हिस्सा है। इसी पर बात करेंगे। डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे हसीब भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब भट्टी, बताएगा हुक्मनामा लिखवाया जा रहा है, अब तक जो होने वाली समाअत उसकी क्या तफसीलात बताएंगे? देखिए, आज हुक्मनामा भी लिखा दिया। जस्टिस शौकत सिद्दीकी एडवोकेट जो जज थे उनको पेंशन के हवाले से और दोबारा बहाली के हवाले से ये जो उनकी दरख्वास्त थी उसके ऊपर ओपन कोर्ट में हुआ था। और इसमें आज जो सबसे बड़ी पेशरफ्त है वो हुकूमत की जानिब से रिटायर्ड जजेस का जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ कार्रवाई के हवाले से अपील दायर करने का जो फैसला किया गया। और उसमें बताया गया अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि उन्होंने एक दरख्वास्त जमा करवा दी है और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी इस केस को जो है टेकअप करे। इसके साथ साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो फैसला था उसके खिलाफ अपील की भी दरख्वास्त की गई जो जज शौकत सिद्दीकी के वकील अहमद अली खान की जानिब से कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले के खिलाफ अपील करना चाहते हैं। उसके फैसले को रिव्यू किया जाए, जिस पर जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उनका ये बात है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, इसके लिए प्रॉपर एक तरीकाकार है जिसके बाद ये हो सकता है। और आज के जो आज की कार्रवाई थी इसमें जैसे सादत अली खान ने कहा कि ना तो सब कह रहे हैं कि इंक्वायरी नहीं हुई, अगर तकरीर हकायक के खिलाफ थी तो शौकत सिद्दीकी क्या मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए, तो इस पर बैरिस्टर सलाउद्दीन का कहना था कि अगर जी मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं। और इसके साथ साथ सुप्रीम उनका ये मजीद ये कहना था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दायरा इख्तियार महदूद है। उसके साथ साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क किए कि क्या हम गवाहान के बयानात और इन पर जेरा करें, जिस पर बैरिस्टर सलाउद्दीन का कहना था कि हाई कोर्ट ने आर्टिकल 199 के तहत ये इख्तियार इस्तेमाल करती है तो सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि 184(3) की दरख्वास्त दायर की तो सिर्फ जज की पेंशन बहाली की बात क्यों कर रहे हैं, जिस पर उनका कहना था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रिटायर्ड जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, इसलिए हम सिर्फ अपनी पेंशन की बहाली के लिए हमने अपनी दरख्वास्त दी है। जी बहुत शुक्रिया हसीब भट्टी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताते चलें जवाबात में इल्ज़ामात का जवाब दिया गया है, हुक्मनामे में ये भी कहा गया है और इस हवाले से हुक्मनामा बाकायदा तौर पर लिखा जा रहा है। और चीफ जस्टिस की जानिब से ये अहम तरीके रिमार्क्स भी सामने आए हैं कि अगर ज़रूरत समझी तो केस को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर भी कर सकते हैं। हसीब भट्टी, आप तमाम तर तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिए। टेलीनॉर लाया मंथली एक्सट्रीम प्रो मैक्स ऑफर, जिसमें मिले 100 GB डेटा चाहे दिन हो या रात और अनलिमिटेड टेलीनॉर मिनट्स के साथ 800 अदर नेटवर्क मिनट्स, वो भी सिर्फ 1400 रुपए में महीने भर के लिए। तो अभी अपने करीबी रिटेलर या माई टेलीनॉर ऐप से ऑफर लगवाएं। पाकिस्तान जितने खाने बनाता है, नया ब्राइट उतने ही दाग मिटाता है, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। जैज मंथली यूट्यूब एंड सोशल ऑफर, पाएं 15 GB इंटरनेट, 50 दूसरे नेटवर्क मिनट्स, 500 जैज मिनट्स और SMS सिर्फ 380 रुपए की डिस्काउंटेड प्राइस में। *620# कोड मिलाएं। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज सुपर 4G। चाहे कुछ भी हो जाए, बाल रहे फिंगर कोम रेडी।
विद पाम ऑलिव नेचुरल शैम्पू, बालों को बनाए इतना स्मूथ और मैनेजेबल कि आप करें बस फिंगर कॉम्ब। यूफोन 4G सुपर कार्ड, जिससे मिले शॉक ऐप बिल्कुल फ्री, 20 GB और नॉन स्टॉप कॉलिंग मिनट्स के साथ। तो अभी *899# डायल करो। पाकिस्तान जितने खाने बनाता है, नया ब्राइट उतने ही दाग मिटाता है। क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपको मिले हर बार साफ और सेफ दूध, पैकेज दूध, सेहत महफूज। नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करे हर हेयर स्टाइल। इस शादी सीजन जब बाल हो थिक, कोई भी स्टाइल करो पिक। आज मैं इसे कुछ कह क्यों नहीं रही, ताकि ये कल खुद उठना सीखे। नेस्ले नीडो स्कूल एज न्यूट्रिशन और आपकी यही चॉइसेस इनको हर बढ़ते स्कूल एज चैलेंज के साथ बढ़ने में मदद करती रहेंगी। नीडो न्यूट्रिशन टू ग्रो फ्रॉम नेस्ले। एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से मजबूत, जड़ से मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। आज पाकिस्तान के हर 10 में से 9 बच्चों की खुराक में आयरन की कमी है। लेकिन मैं वो माँ नहीं जो अपने बच्चे में कमी आने दूं। इसलिए मेरा एतमाद नेस्ले बुनियाद आयरन प्लस रोजाना, जिसमें मौजूद आयरन प्लस और एक ग़िज़ाई अज्जा आयरन की कमी को पूरा करने में मदद करें। अब ये पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि जब इरादे मजबूत तो आगे बढ़ते कदम और भी मजबूत। नेस्ले बुनियाद आयरन प्लस, बेहतर जिंदगी की और भी मजबूत बुनियाद। अब होगा हर एक्शन ग्रैंड विद यूफोन 4G सुपर कार्ड, जिससे मिले शॉक ऐप बिल्कुल फ्री, 20 GB और नॉन स्टॉप कॉलिंग मिनट्स के साथ पूरे महीने के लिए सिर्फ ₹949 में। तो अभी *899# डायल करो, क्योंकि सुपर कार्ड से शॉक तो लगेगा। डोंट वरी, ब्राइट साहब ब्राइट कर देगा। आज मैं इसे कुछ कह क्यों नहीं रही, ताकि ये कल खुद उठना सीखे। नेस्ले नीडो स्कूल एज न्यूट्रिशन और आपकी यही चॉइसेस इनको हर बढ़ते स्कूल एज चैलेंज के साथ बढ़ने में मदद करती रहेंगी। नीडो न्यूट्रिशन टू ग्रो फ्रॉम नेस्ले। एरियल की कड़क धुलाई पूरे 70 रुपए की बचत के साथ। अब महंगाई और दामों दोनों की होगी सफाई। अब डेटा मिले एक्सट्रीम विद मंथली सुप्रीम। लगाए और पाए पूरे 20 GB डेटा और इसके साथ 500 अदर नेटवर्क मिनट्स और 5000 जोंग मिनट्स और SMS सिर्फ 999 रुपए के लोड में। अभी *3030# मिलाएं। Sound 4G। सर्दियों में हीटर चलाएं तो थोड़ी सी खिड़की खुली रखें, वरना सोने से पहले हीटर के साथ खिड़की भी बंद कर दें, क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है। सुई सदन गैस कंपनी लिमिटेड। Dawn's 19th Education Expo 2024 opens the doors to a world of opportunities, bringing together prestigious universities from across the globe. Explore top-notch institutions from North America, the UK, Australia, Germany, Turkey, France, Japan, Ireland, Pakistan, Malaysia, Canada, USA, UAE, Hungary, Austria, and many more. If you're at a career crossroads, uncertain about your study destination, we've got you covered.
Make informed decisions about your future through free academic and visa consultation, interaction with global universities, wide range of educational programs, scholarships and funding opportunities. Join us on January 27th and 28th at Pearl Continental Hotel in Karachi, January 31st at Serena Hotel in Islamabad, and February 3rd and 4th at Pearl Continental Hotel in Lahore. This life-changing opportunity is free for all. Register now at educationexpo.dawn.com. जैज मंथली यूट्यूब एंड सोशल ऑफर पाएं 15 GB इंटरनेट, 50 दूसरे नेटवर्क मिनट्स, 500 जैज मिनट्स और SMS सिर्फ 380 रुपए की डिस्काउंटेड प्राइस में। *620# कोड मिलाएं। सुपर नहीं तो 4G नहीं। जैज सुपर 4G। ओलिविया हेयर कलर का 40 साल तजुर्बा, महारत और एतमाद। हर एक के बस की बात नहीं, सबसे ज्यादा नेचुरल एंड फैशन शेड्स जो दे मेरे बालों को नया रंग, नई जान। और फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड जो ओलिविया की सुपीरियर क्वालिटी का सबूत है। मेरे पास ओलिविया हेयर कलर के अलावा कोई चॉइस ही नहीं। ओलिविया, शुक्रिया। खबर आप तक पहुंचाएंगे। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लैब की मशीनरी में खराबी से धमाका हो गया है, जिसके नतीजे में 2 तलबा बताए जा रहे हैं कि झुलसकर जख्मी हो गए हैं। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। डॉन न्यूज के नुमाइंदे वसीम रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताएगा जख्मी होने वाले तलबा की हालत कैसी है अब? जी देखें, बिल्कुल 2 तालबात इसमें जख्मी हुए हैं। तलबा उनको तिब्बी इमदाद जो है वो दी जा रही है, उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जनरल अस्पताल के करीब पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज की ये लैब है, जिसकी मशीनरी में खराब होने से आग लगी और आग के बाद जो है वो धमाका हुआ। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक इतला मिलने पर फौरी तौर पर रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंची, क्योंकि आग जो है वो मामूली नौयत की थी जिस पर फौरी तौर पर काबू पा लिया गया। तमाम मशीनरी में जो धमाका हुआ है उस हवाले से तफ्तीश जो है वो की जा रही है। दोनों जो तलबा हैं इनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जैब कुआ पर जो आग लगी थी उसको कंट्रोल कर लिया गया और मौके पर जो मुतलका हुकाम मौजूद हैं वो इस हवाले से तफ्तीश कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया वसीम, आपने तफसीलात से आगाह किया। खबर आपको देंगे। लकी मरवत में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की गाड़ी पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई है। हमले में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर महफूज रहे हैं, उनकी गाड़ी को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। लकी मरवत में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की गाड़ी पर नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर महफूज रहे हैं और गाड़ी को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। खबर आपको देंगे। पेशावर सदर में गुज़िश्ता रोज लगने वाली आग से मुतासरा मोबाइल प्लाजा में दरारें पड़ गई हैं। किसी भी हादसे से बचने के लिए प्लाजा को सील करके गैर मुतालिका अफराद के अंदर जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस वक्त डॉन न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल हकीम मोहम्मद प्लाजा में ही मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या सूरत हाल देख रहे हैं। जी अब्दुल हकीम, बताएगा कितना नुकसान हुआ है और क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, इस वक्त हम पेशावर सदर में जो कल आग लगी थी मोबाइल प्लाजा के, 2 मंजिला प्लाजा है, इस वक्त वहाँ प्लाजे के अंदर हम मौजूद है और प्लाजे को काफ़ी शदीद नुकसान पहुँचा है। प्लाजे को सील भी कर दिया गया है। अगर कैमरामैन दिखाए, ये जो खिड़की मुकम्मल तौर पर टूट गई है और इसके अलावा जो मुख्तलिफ दीवारों में जो है दरारें पड़ गई है। इस वक्त इमरजेंसी ऑफिसर सादतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पोजीशन है इस वक्त और आपके अंदाजे के मुताबिक कितना नुकसान हुआ होगा। सादतुल्लाह इमरजेंसी ऑफिसर, नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये ऑपरेशन 36 आवर से कंटिन्यू है और इसकी जो शिद्दत है उसको तो हमने कल 2 बजे डिक्लेयर किया था कि अब ये ख़तरे का आग नहीं है और अदरवाइज़ जो कूलिंग का अमल है वो जारी है। अभी तकरीबन 2 घंटे आगे भी हमने इसको कंटिन्यू करना है, फिर हमने इसको क्लियर करना है। शुक्रिया। इमरजेंसी ऑफिसर है रेस्क्यू 1112 के, ये बता रहे थे। और कल इस अफसोसनाक वाक़या में अरबों रुपयों का नुकसान हुआ है। जो मालिकान है दुकानदारों के, उनके मोबाइल फ़ोन्स और एक्सेसरी जो है वो जलकर राख हो गए हैं और गैर मुतल्लक़ अफराद को इस सड़क को मुकम्मल तौर पर बंद कर लिया गया है। ट्रैफिक के लिए न गाड़ियों की इजाज़त दी जाती है और ना जो पैदल आने जाने वाले लोग हैं उनको इस प्लाजे के अंदर जाने की इजाज़त दी है और न इस प्लाजे की तरफ जाने की इजाज़त दी जाती है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल हकीम आपका। आगे बढ़ेंगे, अपने नाज़रीन को बताएं कि पाक अफगान तोरखम बॉर्डर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आज 11वें रोज़ खोल दी गई है। 2 तरफा तिजारत के लिए बॉर्डर दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के बाद खोला गया है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे। डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अमान शनवारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अमान, बताइए।
जी आज पाक अफगान तुर्खाम बॉर्डर का 11वां दिन है। 10 दिन बॉर्डर बंदिश के बायस यहाँ पंसी हुई गाड़ियों के ड्राइवर और जो ट्रांसपोर्टर ताजर थे उनको सख्त मुश्किलात का सामना था। आज 11वां रोज़ पाक अफगान तुर्खाम बॉर्डर पे तिजारती सरगर्मियाँ बहाल हो गई है। इक़्तिसादी माहिरीन का कहना था कि यौमिया जो पाक अफगान तुर्खाम बॉर्डर पे खसारत कौमी ख़जाने को $2.4 मिलियन थी। जो हुकूमी ख़जाने को नुकसान हो रहा था, इंशाल्लाह आज से यहाँ पे जो रिवेन्यू जनरेशन है वो बहाल होगी। और आपको ये भी बताता चलूँ कि तुर्खाम बॉर्डर पे आज 11वें रोज़ पर तिजारती सरगर्मियाँ बहाल हो गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पाक अफगान शाहराह पर अब भी गाड़ी खड़े हैं, लेकिन वहाँ तुर्खाम बॉर्डर पे जो क्लियरेंस अमल है वो बहाल हुआ है और आज 11वां रोज़ तुर्खाम बॉर्डर तिजारती सरगर्मियों के लिए खुल दिया गया है। जी खबर आपको देंगे, कराची में मुबीना टाउन थाने के सामने दूध की दुकान पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज ना हो सका। नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ भाग जबकि 3 जख्मी हो गए थे। तो खबर आपको दे रहे हैं कि आज एक रोज़ गुजरने के बावजूद भी कराची के मुबीना टाउन थाने के सामने दूध की दुकान पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। इससे बात करेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल खान हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताएगा मुकदमा दर्ज ना होने की क्या वजह सामने आई है? जी बिल्कुल, देखें मुबीना टाउन थाने के दूध की दुकान पर फायरिंग का वाकया गुज़श्ता रात पेश आया था। थाने से 20 कदम के फासले पर टारगेट ने